Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
कीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप म्यूट पे है। Mega, you continue with Om Ajnanatimmirandasya. Then after that, Samsara Sagare Magnam. Otherwise, you distribute it, Ankit through, you distribute it. Okay. Mega, you can start Om Ajnanatimmirandasya. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। Prabhuji, should I do the whole Mangalachal or only the? No, now Dhyan Sloka. संसार सागरे मग्नं दीनमां करुणानिधे कर्मग्राह्य गुहितांगं मामुद्धार भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सर्वथा सफलस्त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। संध्या माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्वस्तुतरुकराग्रविकलत्कल्पप्रसूनालुप्तं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं षष्ट्र अष्ट्रतनिभिर्निविलसद्गोपीसहस्राव्रतं हस्तन्यस्तन्तापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृतिः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे हृदाश्रुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण माता जी। कोमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीमद्भागवतं नाम पुराणलोकविश्रुतं शृण्यत् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठयेत् शृण्ययाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभेत्। कंटिन्यू प्रभु। और गोपिका माता जी। हरे कृष्ण। ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। To continue, Prabhuji. Yes, Mataji. वस्त्रलङ्कारणैः पुष्पैः धूपदीपोपहारकैः वहीकृतोर्ययं तैश्च सस्त्रिया सत्पतिर्यथा
शुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मेदज्ञानं विनाशय। सुभाष प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतस्त अर्थेषु अभिज्ञात् स्मारत् तेने ब्रह्म हृदय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वार्यमुत्तम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्ण। प्रभु जी, परिपूर्णा माता जी इज देयर। Continue. ओके। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मया तनयो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतिथितिष्ठतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगीयम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां सकता कृष्ण पुण्यश्रवणकृत्तनः यन्तस्तो हि अभद्राणि विष्णोति सुरसताम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमः। चरपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्रामतारिणे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागतम है। आज हमारा श्रीमद् भागवतम में 8वां स्कंद में अध्याय 24 श्लोक संख्या कितना 21 23 प्रभु। ओहो 23। हाँ कल हम लोग देख रहा था सत्यव्रत राजा ने विष्णु अभी मछली का अवतार लेने वाला है, ले लिया है। उन्होंने ऐसी कृतमाला नदी में स्नान करते हुए उसी समय उन्होंने ऐसी पानी वापस उनको
अर्पित करते हुए उसका उनका हाथ में एक मिला है। तो मछली वापस बोल रही है मुझे अच्छा जगह पे छोड़ दो, और नहीं तो यह दूसरा आके खाएगा। फिर उन्होंने घर पे लेके कमंडलू में रखा है। कमंडलू तो छोटा हो गया। फिर वापस वही मछली उनका शरीर बढ़ाता है, फिर कुएं में डालेगा तो वो कुएं में कम हो गया। कुएं से लेकर उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सरोवर में, फिर सरोवर से लेकर उनको समुद्र में, समुद्र से अभी बड़ा होता है। ओके यहाँ अभी लोग हम आज कल देखा था श्लोका नंबर 22 है। The fish then said, "O king, I am a large aquatic. This water is not at all suitable. Find some way to save me. It will be better to put me in the water of a lake." सरोवर में डाल दिया. He will never reduce. Okay. श्लोका नंबर 23. इत्युक्तः सोनयन् मत्स्यं तत्र तथा विदासिनी जलाशये सम्मितं तं समुद्रे பஞ்சனஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிக்க முடியுது. ஓகேம்மா, அதுக்குதான் கேட்டேன். சரி, we'll start with Gajendra. Gajendra, start. Gajendra. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, पढ़िए। synonymous इति उक्तः thus being requested say the king anayat broth mastayam the fish tatra tir in tatra tir in avidasini where the water never diminishes. Very good. Jala ashaye in the reservoir of water. Asammitam unlimited unto the fish. Samudra in the ocean. Prakshipata Triv Jasham the gigantic fish. Translation by Prabhupada. Jai Prabhupada. When thus requested, King Satyavrata took the fish to the largest reservoir of water, but when that also proved insufficient, the king at last threw the gigantic fish into the ocean. Thank you, Gajendra. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसी ही वो मछली ने सत्यव्रत राजा को विनती किया है। राजा ने क्या किया, वो मछली को ऐसी सरोवर से लेकर सीधा समुद्र में डाल दिया। क्षिप्यमाण तमोहेदमिह मां मकरादयः अदन्त्यति भलावीर माम्ने होत्स्रष्टुमर्हसि। हरे कृष्णा। रमेश अदनानी प्रभु।
रमेश शब्दा प्रभुपाद जय प्रभुपाद कृषि माने being thrown Prabhu, your Wi-Fi is a problem, I think. Pita in this place, Mama. Telling anything. हरे कृष्णा, इट्स नॉट क्लियर। प्रभु, रमेश प्रभु, आपका आवाज क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा। अभिषेक, अभिषेक जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। तो शब्दार्थ से पढ़ूं पूरा? पढ़िए। एक मिनट, कहाँ गया? 24 वाला। विक्षयमाणः, समुद्र में फेंके जाने पर। तमः, राजा से। अह, मछली ने कहा। इदम, यह। इह, इस स्थान में। मामः, मुझको। मकर आदयः, मगर जैसे घातक जलचर। अदंती, खा लेंगे। अति बलः, अत्यंत बलशाली होने के कारण। वीर, हे वीर राजा। माम, मुझको। ना, नहीं। इह, इस जल में। उत्सृष्टुम, फेंकना। अर्हसि, उत्सृष्टुम, उत्सृष्टुम, फेंकना। अर्हसि, तुम्हें चाहिए। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। समुद्र में फेंके जाते समय मछली ने राजा सत्यव्रत से कहा, हे वीर, इस जल में अत्यंत शक्तिशाली एवं घातक मगर हैं जो मुझे खा जाएंगे। अतएव तुम मुझे इस स्थान पे मत डालो। हरे कृष्ण। उनका इतना परीक्षा दे रहे हैं मत्स्य अवतार में, वो एक एक करके अभी 3 जगह हो गया, अभी चौथा जगह भी ठीक नहीं है, अभी कहाँ जाऊं, यही चक्कर है। यहाँ देखिए, सबसे पहला जल में मिला था, कृतमाला नदी में। उसके बाद मालूम पड़ा उनको कमंडलू, कमंडलू के बाद सरोवर, अच्छा कुबे के बाद सरोवर, सरोवर के बाद अभी समुद्र में। 5 जगह हो गया। अभी 5वां में भी बताते ये भी ठीक नहीं है, यहाँ आके मकर खा जाता है, मुझे डरता है, ऐसे बोलता है। नेक्स्ट माँ। एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गु भारतीं तमाह को भवान् अस्मान् मत्स्य रूपेण मोहयन्। हरे कृष्णा। समीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम बढ़िया। प्रभु। शब्दार्थ। जय श्री प्रभुपाद की जय। एवं, इस प्रकार, विमोहितः, मोहग्रस्त, तेन, उस मछली के द्वारा, बदता, कहे जाने पर, बल्गु भारती, मधुर वचन, तम, उससे, अह, कहा, कौन, भगवान, आप, अस्मान, इस, हमको, मत्स्य रूपेण, मछली के रूप में, मोहयन, मोहित करने वाले। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। जय शिला प्रभुपाद की जय। मत्स्य रूप भगवान से इन मधुर वचनों को सुनकर मोहित हुए राजा ने पूछा, आप कौन है? आप तो हम सबको मोहित कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ मालूम पड़ गया सत्यव्रत राजा को, ये तो इनको मोह में डाल दिया। सवाल पूछता है, आप इतना विचित्र है, हमको क्या करते, इतना मोह में डाल दिया।
आप कौन है। इसका मतलब अभी तक वो सत्यव्रत राजा को मालूम नहीं है, भगवान स्वयं आया हुआ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्मभिः सुतोऽपि वा यो भवान् योजना सातम् अन्नभिव्यानसे सरः। हरे कृष्णा। प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। न नहीं एवं इस प्रकार वीर्य शक्तिशाली, जलचर दृष्ट देखा गया, अस्माभिः हमारे द्वारा, श्रुत अपि सुना भी नहीं गया, वा अथवा यह जो भगवान आप योजन शतम सैकड़ों मील तक अहना एक दिन में अभिव्यानशे बढ़कर सरय जल। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। हे प्रभु, एक ही दिन में आपने अपना विस्तार सैकड़ों मील तक बढ़ा लिया है और नदी तथा समुद्र के जल को आच्छादित कर लिया है। इससे पहले मैंने न तो ऐसा जलचर पशु देखा था और न ही सुना था। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ मालूम पड़ गया, आपको देखा नहीं है, आपके बारे में सुना भी नहीं है। So my Lord, in one day you have expanded yourself for hundreds of miles, सैकड़ों माइल, covering the water of the river and the ocean. Before this, I have never seen or heard of such an aquatic animal. मतलब अभी तक जो जलचर है उसमें ऐसी नहीं देखा ही नहीं है। क्या कहते हैं? ऐसी देखा नहीं है, इसका मतलब सुना भी नहीं है। So he is completely into the bewilderment, आश्चर्यचकित दिख रहे हैं। भगवान का जो भी लीला है हमेशा आश्चर्यचकित है, इसलिए बारंबार बोलते हैं अद्भुतम, सब कुछ अद्भुत है उनका, क्योंकि एक कारण है भगवान का लीला भी ऐसे ही, भगवान का दिव्य नाम भी अद्भुत है। इतना उनसे हमको प्राप्त कर सकते, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि असली संबंध तो आपका भगवान के साथ ही होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमको यहाँ आना पड़ा, जैसी शिक्षाष्टम में बताता ना, दुर्दैवम ईदृशम। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग को जो टूटा हुआ संबंध को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने कृपा करके क्या किया, 4 प्रकार में अपना शक्ति को रख दिया। सबसे उत्तम क्या है? भगवान का दिव्य नाम। ऐसी भगवान का दिव्य नाम देते हुए हमको प्राप्त कर सकते भगवत धाम, क्योंकि भगवान सारी शक्ति उसमें रख दिया। दूसरा, भगवान का दिव्य रूप, क्योंकि जो भी मंदिर में अर्च्य विग्रह को, उपासना करने वाला मूर्ति को जाके दर्शन कर लो श्रद्धा पूर्वक, पूरी तरह से हमारा ध्यान रखे, फिर क्या आप प्राप्त कर सकते? ऐसी ही भगवत धाम लौट सकते हैं। तीसरा क्या है? भगवत लीला। भगवत लीला बोले तो अनंत है, कल भी हम लोग देखा था। इसलिए दिव्य लीला से क्या होता है, हमारा संबंध भी वापस पुनर्स्थापित कर सकते हैं। चौथा क्या है? भगवान का दिव्य गुण, क्योंकि भगवान का दिव्य गुण बोलेगा तो एक एक गुण सुनकर हम लोग को क्या होता है? रोमांचित। क्या कारण है? भगवान का गुण तो इतना कृपालु है, इतना दयालु है, इसलिए उनका क्या कहते हैं हम लोग? दीनवत्सल, भक्तवत्सल, अनेक नाम ऐसे ही है। So that means the Lord is the most merciful and most beneficent. यहाँ उन्होंने ऐसे ही बता रहे, आपको ऐसी देखा ही नहीं है, सुना हुआ। So that means the what is it called? The Leela purpose is to attract this wonderful devotee whose name is Satyavrata Raja. ये सत्यव्रत राजा किधर का, कौन सा देश का राजा है? द्रविड़ देश प्रभु। ठीक है, नदी का नाम? It starts with some K प्रभु, I can't remember that. Kevala something it will come. कृतमाला। कृतमाला। Thank you माता जी। वैगई नदी। वैगई नदी। अच्छा, अभी देखिए एक एक लीला में इतना अनुभव होता है। अभी यही स्कंद में हम लोग सबसे पहला देखा था, जो गजेंद्र चरित्र में भगवान ने इतना कृपा करा। फिर आगे देखिए उसमें हम लोगों को मिला है
समुद्र मंथन, और उसमें भी अद्भुत लीला बहुत है, राइट। मतलब हर एक लीला तो अद्भुत है, क्योंकि भक्त को आनंद प्रदान करने वाला है। अभी देखिए, जितना भी हम लोग ये कथा जितना बार भी सुनते रहो, आनंद हर बार अलग अलग तरीका से, क्योंकि ये परम संबंध होता है। असली बोलेगा तो हमको परम संबंध होने के बाद हमको यही प्राप्त कर सकते हैं। मगर हम लोग क्या हुआ, ये परम संबंध को वापस स्थापन करने के लिए कोशिश नहीं करता है। क्या कारण है? हमारा अज्ञान की वजह से। क्यों अज्ञान है? भौतिक आसक्ति की वजह से। तो अभी आइए, आसक्ति को कैसे काटेंगे, कैसे टूटेंगे? एक ही मार्ग है। कौन सा तलवार चाहिए? ज्ञान। ज्ञान किससे प्राप्त होता है? गुरु के द्वारा। किसके बारे में? परम सत्य के बारे में। So like this, it's a chain, and we have to get connected properly. Automatically, one can gain the knowledge and cut this chain, or what we call हृदय ग्रंथि बोलते हैं ना, उसको काट सकते हैं। कैसे? ज्ञान का द्वारा कर सकते हैं। So naturally, when you use the knowledge, automatically that is cutting the ignorance. Okay. So this way, the leela is making bewilderment. So हम लोग भी देख नहीं सका, right? So we are not able to imagine how is it possible. A small fish becoming so big, and unlimited. Hare Krishna. Next one. नूनं त्वं भगवान् साक्षात् दरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां दत्से रूपं जलौकसाम्। ओकशाम, सब लोग याद रखिए। हाँ, ओकशाम बोलेगा तो क्या है? कौन सा श्लोक याद आना चाहिए आपको? वंदे नंदव्रत श्रीनाम पादरेणुम अभीक्ष्णशः याशा हरिकथोद्गीतम। ब्रजोकशाम, व्हाट इज द श्लोक? आई भगवान। हाँ, अहोभाग्यम 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 नंद गोप ब्रजौकशाम। ब्रजौकशाम मतलब जो ब्रजवासी है उनको बोलते हैं ब्रजौकशाम। यहाँ लिखा है जलोकशाम, जो पानी में रहने वाला है। शब्दार्थ में क्या लिखता है? लाइक एन एक्वाटिक। ओकशाम बोलेगा तो स्थान है, उसमें रहने वाले को बोलते हैं जलौकशाम। ओके, अभी पढ़ने के लिए बुलाता हूँ गोपाल घनश्याम। वाईफाई ठीक है गोपाल घनश्याम? उनका ठीक नहीं दिखता है। कोमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। शब्दार्थ। नूनम निश्चय ही, त्वाम तुमको, तुम हो, भगवान भगवान, साक्षात प्रत्यक्ष, हरि भगवान, नारायणः भगवान, अव्ययः अव्यय, अनुग्रहाय दया दिखाने के लिए, भूतानाम सारे जीवों के लिए, धास्य धारण किया है, रूपम रूप, जल ओकसाम जलचर की तरह। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हे प्रभु, आप निश्चय ही अत्यय अव्यय भगवान नारायण श्री हरि है। आपने जीवों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही अब जलचर का स्वरूप धारण किया है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यहाँ राजा सत्यव्रत इतना शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको समझ लिया ये भगवान स्वयं हरि ने ऐसी रूप धारण किया है लीला करने के लिए, राइट। मगर दो श्लोक पहले पूछा था आप कौन है। अभी दूसरा श्लोक में क्या बता रहे? आप हरि के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अनंत है, आप अव्ययम है, इनएग्जॉस्टेबल। मतलब उनको तो सीमा है बहुत, राइट। So असीम, okay. So like that we have to understand what is more important here is his supremacy is always inexhaustible. So it shows how the Lord is so merciful and coming down to living entity to take them into the back to Godhead by performing such leela. He have now assumed the form of an aquatic. ऐसी एक लीला है, मतलब भागवतम में है मगर अभी नहीं है। ये तो आता है
आगे आने वाला स्कंद में, मतलब 10वें स्कंद में, ऐसी वो भक्त भी पहला पूछता है आपको ने इतना तेजस्वी है आपके पास, राइट। मुचकुंद चरित्र में देखेगा तो वहां भी जैसे ही उन्होंने आंख खोल के सामने काले यवन को भस्म कर दिया, फिर पीछे से देखेगा तो गुफे से कुछ रोशनी निकलता है, फिर मुचकुंदा देखता है, देख के उनको दंडवत करता है, दंडवत करके बोलता है आप तो इतना तेजस्वी है, आप कहाँ से इतना तेजस है, आप कौन है, ऐसी एक बार पूछता है। दूसरा तीसरा श्लोक वहां भी ऐसे होता है, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसका मतलब जिसको भगवान के बारे में जानकारी है, जिन्होंने भगवान के विषय में जानता है, उनको ही हो सकता है। अगर अज्ञानी जो है, ये तो नास्तिक वाला है, ये तो समझना संभव ही नहीं है। पहला श्लोक में हमको देखा था ऐसी कौन है, मगर दूसरा श्लोक में फटाफट बता दिया आप हरि है। See, that's what even I tell you, we are meeting someone after so many years, right? And we go to the airport to receive them, right? First few minutes when they come out of the arrival, so we are struggling, who is he, right? After some time, we try to recollect the memory. But how? Because there is already knowledge about him. He is having this face, that. So slowly we try to identify. Then we say, oh, he is my friend, so and so. So like this, unless you know the person, you cannot definitely recognize. Here, both Muchkunda as well as here, the Satyavrata Raja, they were fully aware of the knowledge of the Absolute. So Satyam Param Dhimahi. So they were aware of it. That's why they are able to recognize. Otherwise, they will not be able to. They will be struggling along. So this way, here also, Satyavrata Muni was able to quickly recognize the Lord, and immediately he starts glorifying. Next, Padingama. Namaste, Purusha. नमस्ते पुरुष श्रेष्ठ सित्युत्पत्त्यप्येश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हि आत्मगतिर्विभो। आने के लिए बोलो नीचे, ओके नीचे, ओके ओके नीचे कोई जाने का है, प्रसाद आ गया। हरे कृष्ण। अंकित अंकित हरे कृष्ण। हाँ सब नमः, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ते तुमको पुरुष श्रेष्ठ, हे जीवों में श्रेष्ठ, समस्त भोक्ताओं में श्रेष्ठ, स्थिति पालन उत्पत्ति सृष्टि अपव्यय तथा संहार के ईश्वर परमेश्वर, भक्ता नाम अपने भक्तों के, नह हम जैसे, प्रपन्नानाम शरणागतों के, मुख्य परम ही निसंदेह, आत्मगति ही परम गंतव्य, विभो भगवान विष्णु। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद। हे प्रभु, हे सृष्टि पालन तथा संहार के स्वामी, हे भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु, आप हम जैसे शरणागत भक्तों के नेता तथा गंतव्य है। अतएव मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। स्तुति नो हरे कृष्ण। அடுத்த ஸ்லோகாவா? இல்ல நெக்ஸ்ட் இல்ல ஒரு நிமிஷம் हरे कृष्णा। यहाँ देखिए ये स्तुति कैसे प्रारंभ होता है। ओ माय लॉर्ड, मास्टर ऑफ क्रिएशन, annihilation and maintenance. So automatically the glorification of the Lord starts with the three. So we have to understand, to glorify the Lord, to start in which order, right? So we can glorify according to our knowledge, but here there is a normal standard maintained by all of them, right? If you look at it, first they glorify the Lord with all the Shakti what they have, right? What the Lord has got. यहाँ देखिए उन्होंने सबसे पहला क्या बताता है, आप सृजन करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है, संहार भी करने वाला है। आगे क्या लिखता है, वो बेस्ट ऑफ द एंजॉयर्स, परम भोक्ता।
आगे क्या लिखता है? You are the leader and the destination of the surrendered devotees like us. इसलिए क्या लिखता है श्लोका में? क्या शब्द आता है देखिए, आत्मगति ही विभो। विभो मतलब मास्टर। So ultimately we have to understand the Lord is always Vibhu, we are Anu. So we should understand what are the capabilities of the Lord and we have to start glorifying. It's as simple as that. Even Narastuti बोलते हैं ना, right? नरस्तुति में क्या होता है? कोई पहचान वाला होगा तो उसके बारे में बोलने के लिए कोई बुलाएगा तो क्या करेगा? हम लोग दो शब्द बोलेगा तो हम लोग भाई पकड़ के छोड़ेगा नहीं। क्या है? उसको मस्का देगा। So automatically we try to please him and we talk so many things, right? And interestingly, what happens in the process, sometimes we add things. But here, the Lord's glorification is unlimited. We have to understand that. इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बार-बार, यही है, क्योंकि एक श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रवचन करता था, उनका नाम है मुकुर लक्ष्मी नरसिम्हाचार्य। उन्होंने हमेशा प्रवचन करते हुए बहुत आनंद से, इतना उत्साह से उन्होंने प्रवचन करता है हमेशा, भागवत कथा सब कुछ वो हो गया उसी दिन का कथा। उसके बाद वो नीचे आने के बाद भक्तों के जाके बातचीत करते रहते। उन्होंने बीच में बोला, हो मैं और कुछ भगवान का लीला का और भगवान का गुणगान करना भूल गया। इसका मतलब भगवान का गुणगान करने का हम लोगों को योग्यता कम है। क्या कारण है? उनका वो गुणगान करने के लिए गुण तो असीम है। So that's why the unlimited cannot be glorified by the limited. What is that? The unlimited cannot be glorified by the limited. That's why even, what is his name? Ananta Shesh. उनका कितना सिर है? हजारों सिर है, right? So by 1000 hoods, he says, I am trying to glorify, it is not yet over. So that means in all the aspects of the Lord, it is unlimited. In one aspect, we are looking at it, the Lord's leelas are unlimited. Another aspect, we are telling the qualities of the Lords are unlimited. Like this, another aspect, when you talk about it, the names are unlimited. And when we talk about the wonderful form, it is unlimited. That's why he is always called as Vibhu. That's why it is written, Vibhu means Lord Vishnu. Right? उनको विविध प्रकार का शक्तियां हैं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा क्या लिखते हैं बोलते हुए, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। मारते पढ़ेंगे। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुम् इच्छामि यदो रूपं यदर्थं भवता धृतम्। हरे कृष्णा। Bhūti-hetavah, that shabd is very important, right? What is written here? Flourishing condition and causes. किसके लिए? भूतानां, जीव जाल के लिए। Wonderful. जय। Okay. बिंदु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वे सारी लीला लीलाएं अवतारा अवतार ते आपके भूतानाम सारे जीवों के भूति फूलने फलने अभ्युदय की स्थिति के लिए हेतवः कारण ज्ञातुम जानने के लिए इच्छामि इच्छा करता हूँ अदह यह रूपम रूप यत अर्थम जिसके लिए भवता आपके द्वारा धृतम धारण किया गया। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय समस्त जीवों के कल्याण के लिए होते हैं। अतः हे प्रभु, मैं ये प्रयोजन जानना चाहता हूँ जिसके लिए आपने ये मत्स्य रूप धारण किया है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद में क्या लिखता है? All your pastimes and incarnations certainly appear for the welfare of all living entities. लीला सर्वे लीलावतारा, क्या लिखता है श्लोका में? सर्वे लीलावतारा ते भूतानाम, भूताना मतलब सारी जीव जाल को भूति है तवह कारण हुई है। किसके लिए? ज्ञातुम इच्छामि अधो रूपम यदर्थम भवता धृतम। हरे कृष्णा। So wonderful, so wonderful. These are all small stutis
we can definitely make a note of it. क्योंकि मेरे पास एक बुक था, अभी तो मेरा दोस्त को लेके किया, उनको दे दिया मैंने. We have to get it. It's called as exclusively Bhāgavata Stuti. It is compiled by some devotee from Delhi temple, and they have done it so wonderfully. Even 2 shlokas have been included in that. क्योंकि उन्होंने पहला स्कंद में देखेगा तो जैसे ही उत्तरा ने 2 श्लोक में भगवान को स्तुति करती है, वही अध्याय में 7वां अध्याय ऐसे याद है, वहां अर्जुन ने 1 श्लोक में बताता है, नहीं तो 2 श्लोक. ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जितना भी भागवत में छोटा छोटा स्तुति से लेकर बड़ा स्तुति सब उन्होंने उसमें ऐड कर दिया. इट्स कॉल्ड व्हाट इज द बुक नेम? भागवत स्तुति बुक ऐसा कुछ नाम है, भूल गया. So why I am telling you, even in this, that book is made by Rajalila Nath's father. No ma, adilla. It is called Uttar Pradesh. Oh, Rajalila Nath father, he has put all the yes. Keys. Yeah, he has done it, but this one is elaborate. This is much more elaborate. I forgot the name and other things. I'll get you that. It is mentioned very clearly, Bhagavata Stuti book. And he has taken even 1 shloka, 2 shloka also as stutis, and he has given all the things. Actually, we are following that book only for our Saturday stuti class. We are trying to by heart all the shlokas in that. Hare Krishna. Even Gita is having Tamil class for the ladies also. So that way, if you look at it, there are so many wonderful shlokas. Why I am telling you, certain qualities of the Lord are repeated and certain leelas are repeated and certain names are repeated. So what happens? The more you read, automatically you are able to grasp it. So in this regard, I always remember my Shiksha Guru, because Manipur always insists, all of them, no, there will be around 20 devotees, and he will say, all of you, please write it in a book and show it to me tomorrow. Like a school, it's like a pathshala. Otherwise, how we can remember students? And on top of it, he used to write the translation also. Because what happens now, it's merely not by hearting the shloka what he says. He says you should know the meaning also. Because only when you know the meaning, you can preach others. So like this, there are wonderful efforts we can do it, and the life will be sublime. Right? इसमें क्या लिखता है? आत्मगति ही. आत्मगति की मतलब क्या है? The ultimate purpose of human life is achieved by reading the or reciting the or doing the regular exercise on the Srimad Bhagavatam. Nate Arvindaksha Padopasarpanam Mrisha Bhavet Sarva Suhrite Priyatmanah Yate Taresham Pritak Atmanam Satam Adidrisho Yat Vapuradbhutam Hinah. Jai. This is another explanation, and it talks about the description or the beauty of the Lord. So this is very important. I request Sonal Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dhamma Pranam. Yeah, start. English. Sorry. Okay. Synonym and translation by His Divine Grace Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Na, never, te of your lordship, Aravinda Akshaha, my lord, whose eyes are like the petals of a lotus. Pada upasarpanam, worship of the lotus feet. Mrisha, useless. Bhavet, can become. Sarva suhrit, the friend of everyone. Priya, dear to everyone. Atmanaha, the super soul of everyone. Yatha, as. Ita resham, of others, the demigods. Prithak atmanam, living entities who have material bodies different from the soul. Satam, of those who are spiritually fixed. Adidrasha, you have manifested. Yat, that. Vapuhu, body. Adbhutam, wonderful. He, indeed. Naha, unto us. Translation. O my Lord, possessing eyes like the petals of a lotus,
The worship of the demigods, who are in the bodily concept of life, is fruitless in all respects. But because you are the supreme friend and dearmost supersoul of everyone, worship of your lotus feet is never useless. You have therefore manifested your form as a fish. Purport. The demigods like Indra, Chandra, and Surya are ordinary living entities who are differentiated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. The Lord expands himself through the living beings. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam. Katha Upanishad 2.2.13. His personal Vishnu Tattva forms, which are all spiritual, are called Swamsha, and the living entities who are differentiated parts are called Vibhin Amsha. Some of the Vibhin Amsha forms are spiritual, and some are a combination of matter and spirit. The conditioned souls in the material world are different from their external bodies made of material energy. Thus, the demigods living in the upper planetary systems and the living entities living in the lower planetary system are of the same nature. Nonetheless, those living as human beings on this planet are sometimes attracted to worshiping the demigods in the higher planetary systems. Such worship is temporary. As the human beings on this planet have to change their bodies, tatha deham andra praptiha, the living entities known as Indra, Chandra, Varun, and so on will also have to change their bodies in due course of time. As stated in Bhagavad Gita, Antavantu phalam tesham tad bhavati alpa nedasam. Men of small intelligence worship the demigods, and their fruits are limited and temporary. Kames te rita jnanaha prapandate anya devataha. Those who do not know the position of the demigods are inclined to worship the demigods for some material purpose. But the results of such worship are never permanent. Consequently, here it is said, Yate taresham pratyakaha atmanam satam padu pasarpanam mrisha bhavet. In other words, if one is to worship someone else, he must worship the Supreme Personality of Godhead. Then his worship will never be fruitless. Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Even a slight attempt to worship the Supreme Personality of Godhead is a permanent asset. Therefore, as recommended in Srimad Bhāgavatam, Twakta swadharman sharana ambujam hare. Hare, yeah. One should take to worship of the lotus feet of Hari, even if this means giving up the so-called occupational duty assigned because of the particular body one has accepted. Because worship in terms of the body is temporary, it does not bear any permanent fruit. But worship of the Supreme Personality of Godhead gives immense benefit. I think that's it, Prabhuji. Is there more? Can we scroll down in case there is more? Hare Krishna. Is this okay? Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. So here, let's understand this sloka, and the purport is very interesting. There are two different aspects. दो प्रकार का विषय होता है. मैं ऐसे ही सवाल पूछता है, यहाँ भगवान के बारे में क्या क्या टॉपिक्स आ जाता है. हमेशा हम लोग क्या चार टॉपिक के बारे में हमेशा बात करते हैं, राइट. भगवान तो दिव्य नाम में, और भगवान दिव्य रूप में, भगवान दिव्य गुण में, और भगवान दिव्य लीला में, राइट. यहाँ ये श्लोक में ये चारों में दो विषय के बारे में यहाँ स्तुति आया हुआ है. क्या क्या है? Go through the translation slowly and give the answer. No hurry. पद पर शरणम, चरण कमल की पूजा. माता जी नहीं, वर्णन वर्णन बोलेगा तो ये चार विषय में दो विषय के बारे में वर्णन आया हुआ है. दिव्य रूप. वेरी गुड संध्या. एक तो दिव्य रूप, दूसरा क्या है? दिव्य रूप और What is the next one? लीला.
Guna. Guna. So what are the gunas mentioned here? Tell me. भगवान का गुण के बारे में क्या क्या लिखा है बताओ. You are the supreme friend. You are the dearmost of the super soul. What is it? These are all the qualities of the Lord. Right? You got it now? All of you, I will repeat again. आपको समझाता है. यहाँ 4 विषय हम लोगों को भगवान का संबंध स्थापित करने के लिए पिछला श्लोक में बताया. राइट? यहाँ 4 विषय में 2 विषय के बारे में आ गया ये स्तुति में, पर्टिकुलरली ये श्लोका में. एक तो भगवान का दिव्य रूप का बारे में क्या लिखता है? आपका नाते अरविंदाक्ष, भगवान का नेत्र कैसे है? अरविंद के जैसे. पादोपसर्पणम, मतलब आपका पाद कमल कैसे होता है? नहीं सॉरी, पादोपसर्पणम, हाँ, Lotus. Sorry, only one. Yeah, only like a lotus. Okay, there are 2 aspects which is explaining it. Okay, coming back to the qualities. What are the qualities mentioned here? It is one, Sarva Suhrit. Suhrit matlab the most well-wisher. It's a quality of the Lord. Then what is it mentioning? Priyatatmanaha. Priyaatmanaha, sir. Priyatatmanaha. Priyaatmanaha. Priya matlab सबको बहुत प्रिय वाला है. Right? So there are 2 aspects. One is it is talking about the beautiful form of the Lord, and it talks about the beautiful qualities of the Lord. Okay, that's over. Then there is another 2 aspects. One is okay, one is not okay. What is it okay and what is not okay? Tell me. पूजन का बारे में, पूजन करने के बारे में क्या बताता है? पादोपसर्पणम. भगवान का पद कमल को आप पूजन किया होगा तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं है. राइट? अगर वो छोड़कर हम लोग देवता को करेगा तो वो क्या होता है? व्यर्थ है. क्लियर? तात्पर्य में सॉरी प्रोपात ये अनुभव में जाता है. You are the okay, what is that? So possessing lotus hands, worship of the devatas are. So worshipping the devatas is useless, and worshipping your lotus feet is always useful. It's written, your lotus feet is never useless. Okay, so that's why it is extended in the purport the same thing. तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहला उन्होंने क्या कहता है, एक एक देवता का नाम दिया हुआ है. उसके बाद क्या बता रहे हैं प्रभुपाद ने? हर एक को तो हम लोग उपासना करना आवश्यकता नहीं है, because it is going to be temporary. Why? Why it is going to be temporary? Hare Krishna. Because they will also change their bodies, Prabhuji. Very good. They are temporary, and worshipping is also. And whatever they give is also temporary, right? हमेशा के लिए नहीं है. So that is one aspect. That's why it is considered as useless. Right. Coming back to पादोपसर्पणम, इसके बारे में कौन बताएगा? बताओ. और कोई बताएगा? अंकित. हरे कृष्ण प्रभु. नो. हाँ. मनुष्य को हरे कृष्णा, मनुष्य को किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से पूजा से ही सबसे बड़ा लाभ मिलता है. अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा. इसके बारे में कौन सा श्लोक प्रभुपाद ने उपयोग किया है? प्रभुपाद ने कौन सा श्लोक? भागवतम वाला. यथा तरोर. यथा तरोर नहीं है, ये श्लोक में नहीं है. कौन सा श्लोक लिखा है इधर? देखिए. सधर्मम. सधर्मम. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कहाँ आता है? पहला स्कंद में अध्याय 5 ऐसे याद है. तो ये भी 500 वाला बुक में है. अम्मा? यस प्रभु, ये है. It is the 500, right? Yes, Prabhuji. Can you give the number, please? 1 minute. 1517. Okay, thank you. 1517. Can you put it there?
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् पक्वो अतपते ततो यदि यत्र वा क्वा भद्रम् अबुधमुष्यकं को वार्तार्थो अभजतां स्वधर्मतः. I think so I have said it rightly. My mistake is का त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन् पक्वो अतपते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अबुधमुष्यकं को वार्तार्थो अभजतां स्वधर्मतः. Can you go to the translation? Nishika Ravi, can you read the translation, please? Nishika Ravi. Nishika Ravi. Hare Krishna. Yeah, read the translation. Should I read in case somebody is not there? Sorry? Should I read in case nobody is there? No, she is there. Nishika is there. Nishika. She is new. I am trying to encourage her. Sure. Yeah, read it. Nishika? It's not coming. She's a school girl. Nishika, can you read that translation? Mic is on, she's not speaking. I think so. There is a problem with her. Okay. Now, Sonal Mataji, aap padhiye. Sorry, Prabhuji, I didn't know. Should we wait or should I read? Just read. You read the translation only. Translation. That girl is not reading. Sure. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, although fully engaged in occupational duties, does not gain anything. Thank you. Hare Krishna. इसलिए यहाँ प्रभुपाद ये उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म को पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त किया होगा तो वो असली सक्सेस नहीं है. प्रभुपाद सीधा लिखता है, does not gain anything, उसको कुछ फायदा नहीं है. राइट? अगर और एक वक्त अपना स्वधर्म को पालन करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करते हुए सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी उनको क्या कहते हैं? सक्सेसफुल. The reason is he has aimed it for the sake of Krishna. So that means whenever we execute our swadharma, it should always encourage devotional service. Otherwise, it is mere waste. That's why Bhāgavatam says, dharmahassu anushtittah pumsam vishwakshena katasuyah na utpadayet yadiratim. उसमें से भगवान का रुचि आपको बढ़ना चाहिए. कौन सा वाला? हमारा स्वधर्म में. मगर लोग क्या होता है, स्वधर्म पालन करते हुए उपाधि में फंस जाता है. क्या है स्वधर्म? वर्णाश्रम धर्म. राइट? वर्णाश्रम धर्म बोले कहते क्या है? एक तो ब्रह्मचारी है, एक तो गृहस्था है, एक तो वानप्रस्थ है, दूसरा. अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य में है, राइट, उन्होंने ब्रह्मचर्य में भी उन्होंने अपना स्वधर्म को पालन करता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता है ना, ऐसी करते हुए साथ साथ भगवान को बीच में रखेगा तो उन्होंने वो ब्रह्मचर्य व्रत में अगर इधर उधर गिर गया तो भी वो उसको नुकसान नहीं है. राइट? सिमिलरली अदर नॉन डिवोटी, प्रभुपाद क्या लिखता है, अब उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचारी व्रत को बराबर पालन करता है, करते हुए उनको भक्ति में उत्पन्न हुआ है. क्या फायदा है? एक पूज्य है, the big zero. So the real success lies on when you are connected to the devotional service. In this regard, His Holiness Jayadvaita Maharaj, he was giving a wonderful lecture in the Sindhi hall long ago. It was a consecutive 3 days or 2 days festival. It was Shravanam Kirtanam, that was arrangement. At that time,
We had Kirtan for some time, then Shravana. So Maharaj was talking this topic again and again, and he picked up so many shlokas, and he talked about the Bhagavad Gita also. Swalpam abhyasya dharmasya. ये तात्पर्य में भी प्रभुपाद ये कोट किया है, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य, मतलब हमारा थोड़ी सी प्रयत्न भक्ति मार्ग में, अगर हमको तो सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है, परफेक्शन नहीं है, फिर भी गलती से भी हम लोग करता हुआ तो क्या होता है, हमको तो पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं। क्या कारण है? भक्ति मार्ग में जितना भी हम लोग करते हैं कभी भी नुकसान नहीं होता है। So that means we should always endeavor to perform devotion service. Why devotion service? It's as simple as that. Only to please Krishna, no other motive. But those who are following their swadharma, oh, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं रोज 3 बार संध्या वंदन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वेद का अनुष्ठान बराबर करेगा, मगर भगवान का भक्ति सेवन में नहीं लगाएगा, क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, right? So this is what Prabhupada is now simply condemning it, and the Bhagavatam also explains on that. Why the emphasis is given to the devotion service? Because in the Kali Yuga, the topmost and the easiest format of the devotion service is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that means automatically one can gain the real success by simply chanting the holy name. So it is part of the devotion service, and it is always easily possible, and there is no rules and regulations for this. So again, Prabhupada is talking about another few points. इसमें और क्या-क्या बताते हैं हम लोग देखते हैं. I tell you, this purport has got so many wonderful things. Thus, the devatas living in the upper planetary system, living in the lower planetary system, are of the same nature. दोनों एक ही है, क्या फर्क है? कुछ भी नहीं है. देवता और मनुष्य थोड़ा सा फर्क है. इसलिए आगे हम लोग भी देख सकते हैं. When he creates, 2 विषय देखा था हम लोग. एक तो श्वांस, दूसरा तो हम लोग देखा था विभिन्न अंश. श्वांस बोलेगा तो भगवान का स्वयं, राइट? विभिन्न अंश बोलेगा तो भगवान से जो भिन्न हुआ है. मतलब यहाँ देखिए 2 प्रकार का होता है. प्रभुपाद इसमें लिखता है, एक तो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, दूसरा तो आध्यात्मिक प्लस भौतिक. जो आध्यात्मिक प्लस भौतिक बोलेगा तो जीव जाल जितना भी है उसको, जो भी पूरा आध्यात्मिक है, दैट इज ऑल द एक्सपेंशन. समझ में आता है? श्वांस बोलेगा तो भगवान स्वयं एक्सपेंशन होता है. ऐसे ही बलराम जी और 4 पुरुष अवतार, सॉरी 4 श्वांस. व्हाट इज दैट? व्हाट इज संकर्षणा, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha. These are all Shvansh. Then the Purusha avatar comes, that's Vishnu's. Okay. So then comes the Vibhinansh, where that comes from Brahmaji se lekar baki sab kuch. Right? So these are the things. Again, from the expansion of Vishnu are also Vina, and again they are all fully spiritual. Okay. Hare Krishna Prabhuji, can I ask a quick question if you don't mind? Yeah. Prabhuji, in this 1:5:17 that we're just reading, so in the translation, one who has forsaken his material occupations to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger of his being unsuccessful. So am I supposed to read this as only people who forsake their material occupations and are doing devotional service do not fear to be, they should not fear that we'll be unsuccessful? Or if somebody is to... Good question, very good question. So it says, one who has forsaken his material occupation to engage in devotional service. That means they are fully into a devotional service, and the occupational duty or the material occupation is done and not attached. Okay, not attached. Okay. That's why when we do the Varna Ashrama, I told you, that's the reason I told you. For instance, Varna and Ashrama are there. I'll repeat once again for all of your benefit. Varna 4 प्रकार का वर्ण होता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. इन चारों वर्गों के अलग अलग यम नियम होता है. मतलब अपना अपना स्वधर्म को पालन करना है.
अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण बोलेगा तो क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया। So when he is performing his occupational duty, he should not get attached. In the process, if he is able to invoke devotional service by performing it, how to remember the Lord and perform his occupational duty. This is called devotional service. Unattached, at the same time perform his occupational duty. So that is the real success. For a non-devotee, he says, he is totally into that, what is that, occupational duty, but he is not invoking the devotional service. What's the use of it? Because he becomes a karmi. Correct? Is it clear? Yes, Prabhuji, wonderful. Thank you so much for clearing that, Welcome, Prabhuji. welcome, welcome. Yeah. So always we have to remember it. That's what again Chaitanya Mahaprabhu also repeatedly insists. Do not worry about position and all. Wherever you are, you start doing the devotion service, keeping Krishna in the center. Ultimately, we do it for the pleasure of the Lord. Never expect, oh, I am achieving it for my fame, for my so and so, so many, right? Certain. So ultimately, whatever comes, surrender to the Lord. That means do not get attached. For instance, Prabhupada, he left Vrindavan and went to US, right? He did so many wonderful services, right? People are glorifying him left, right, center. But Prabhupada says, oh, this is not me. This is my Guru Maharaj. I told you last time also, I think so, I don't remember. I'll repeat it. One time, one of the disciples was asking Prabhupada, Prabhupada, you are writing your own books. Sorry, you are reading your own books. Why? Then Prabhupada said, who said it's my book? What did he say? Who said it's my book? Then Prabhupada said, all these are by my Guru Maharaj words. I have not written anything. Understood? So that is the way of it. Okay. Then, for instance, if you start speaking wonderfully and your pravachan goes well by the mercy of Guru and Krishna, somebody comes and says, Kali bajata hai, oh Prabhu, wonderful lecture, super, super. सब लोग बोलते हैं, right? वो सुनकर क्या हो जाएगा? हमारा दिमाग अंदर घुस गया तो क्या हो जाता है? Then down. The moment it comes, do not keep it on your hand. Always Prabhupada says it's a very, very hard cake, the fame. क्या करना? साथ साथ उसी समय अपना गुरु को पास कर लीजिए. उन्होंने क्या करेगा? उन्होंने भी हाथ में नहीं रखेगा. It will go on. It's a disciplic succession because the knowledge is gained from the disciplic succession and we do not possess anything in general. I tell you in this regard, today afternoon I happened to meet one of the Muslim guy along with his colleague who is a Hindu. But that Hindu guy is very close to me for more than 20 years. His name is Suresh. This Muslim guy is along with him working in the Deva for the last 25 years. This ISKCON devotee, Suresh, he has initially guided that Muslim guy because he was only a tea boy. Now he has become a clerk or something in the Deva. And he openly says, boldly says, in front of him, I am telling it's not just to boast him or just to, what is that called? I forgot that word. Oh, what is that English word? Glorifying somebody for the purpose of something. What is that? I'm not able to. Flattery? Oh, thank you. Thank you, Mataji. Suddenly it goes out the mind. Flattering. So not a flattery. He said very openly. He was talking to me, he's meeting first time, and he says, I'm not just flattering just because he's in front of me. Today I'm like this means just because he gave me knowledge. He said one word, very simple word. Knowledge cannot be just like that God. Somebody has to be there who is a guru in your lifetime. Either it can be a material guru or a spiritual guru. And he says, see, imagine that much they have faith in their religion also. He says, the Lord sends him. He says that. Allah sends him. He says that. That means we have to have full faith in Guru and full surrender to Guru. This is the real Guru Bhakti. We have seen so many stories in our Puranas, right? Without Guru Bhakti, one cannot achieve success. So that means the success is
just lying by the Guru Bhakti only. If somebody is able to pass on to the Guru, nothing like that. So here also, it's very clearly mentioned, all these are performed to the lotus feet of the Lord, never goes waste. Coming back to the Satyavrata Raja's Stuti, shloka number 30. So he says, it never goes waste, it never goes in drain. Then he is talking about it, another wonderful thing. Those who are thinking too much, antavattu phalam tesham. This is another very important thing. When we talk about worshipping the devatas, antavattu phalam tesham tad bhavati alpa medasam. Alpa medasam, knowledge. Alpa means limited knowledge or zero knowledge. Antavattu because the fall what we are getting or the benefit what we are getting from the devatas are very, very limited and it is short-lived. But unfortunately, people do not understand it. They go and worship Devi, they go and worship Shiva, they go and worship Kartikeya and so on. But they get an immediate benefit. मगर वो जो भी मिलता है कुछ काल के लिए क्षणिक सुख है, मगर भगवान जब भी देता है वो अनंत काल के लिए, राइट? एक एग्जांपल दे दो, किसको दिया है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ठीक है, और प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को ऐसे कुछ नहीं दिया स्पेशल। बलि महाराज। हाँ, कौन बताया? अंकित, सही उत्तर है। देखिए, भगवान ने दो भक्त को विशेष कृपा, मतलब उन्होंने जो दिया था अनंत काल के लिए। क्योंकि ध्रुव महाराज के बारे में हम लोग बोलेगा तो उनको मन में थोड़ा सा इच्छा था, राइट? मगर यहाँ बलि महाराज को ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी दोनों के इतना दिया था अनंत काल। So that's why Prabhupada is condemning worshipping the devata and getting the benefit is short-lived. Okay, आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद यहाँ तो? यथेतरेशम पृथक् आत्मानं सताम पादो pasarpanam mrishab bhavet. In other words, if one worships someone else, he must worship the Supreme Personality of Godhead. Then his worship will never be fruitless. Okay. But similarly, there are lots and lots of cases in the Srimad Bhagavatam from which we can understand very clearly worshipping the lotus feet of the Supreme Lord is the topmost. क्योंकि भगवान हरि का पद कमल को हमेशा आराध्य करो, इसलिए कितना जगह पे, एक जगह पे नहीं है, आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम, एक श्लोक है। एक कौन बता रहा है? शिव जी ने पार्वती को बता रहा है। फिर आगे देखिएगा तो आराध्यो, चैतन्य महाप्रभु क्या बताता? आराध्यो भगवान ब्रजेंद्र नंद तनया, भगवान श्री कृष्ण को आराधना करो। So all these things are leading us to worship Vishnu. There is nothing else. प्रभु जी, कोई आते हुए कृष्ण भावना में उनको बहुत संकट आता है। ओ, मैं इतना दिन शिव जी को पूजन किया, मैं इतना दिन संतोषी माता को पूजन किया, अभी क्या? It's very simple, very simple. It takes time, but be firm. This is what Krishna wants it. Mamekam sharanam braja. Right? Mamevaye prapadyante. So like that, lots of emphatic words comes from Krishna. भगवान ने जो भी शब्द उपयोग कर रहा है ये भगवद गीता में, सब कुछ स्पष्ट है, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। उन्होंने स्वयं कमल मुख खोल के बताता है, हम लोग इसको ऐसे ही स्वीकार करना है, इसके ऊपर आके चर्चा करने का जरूरत नहीं है, इसमें तर्क करने का आवश्यकता नहीं। It is as such as it's a golden verse, right? प्रभु जी, I ask you one thing. प्रभु जी, बोलिए। हाँ जी, मैं सब गीता भी पढ़ती हूँ, भागवतम सुनती हूँ, 32 राउंड्स एकादशी, 64 राउंड्स, पर मैंने गुरु अभी तक नहीं धारण किया। जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब तो साधना बराबर करती है, साधना करते हुए आपको तो ऐसे ऐसे ये सीढ़ी में ऊपर ऊपर आना चाहिए। इसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। मैं इसका बारे में श्यामलांगी से बात किया हुआ है, वो आगे आपको बताएगी।
हाँ, श्यामला ने बोला है क्योंकि वो नियम सारे में प्याज लहसुन नहीं खाती, सब कुछ है, बट ओनली मेरे से एक चाय नहीं छूटती प्रभु जी। हाँ, आप इतना किया, वो भी छोड़ दीजिए ना। वही मुश्किल पड़ रहा है बस दीक्षा लेने हरे के कृष्णा, लिए। ये एक ही आ सकती है, उसको निकाल दीजिए आहिस्ते आहिस्ते। उसको ही निकालना है, बस हरे दीक्षा कृष्णा, लेनी है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी नहीं तो ये इतना डिवोटी कौन इतना है? करने का, इतनी पूजा हाँ, करने का वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा मेरा? अगर गुरु धारण नहीं किया तो वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा ना मेरा? नहीं 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 नहीं, क्या होता है, मनुष्य शरीर लिया होगा तो गुरु का जरूरत बहुत है। हाँ वो बराबर है, पर मैं जैसे कर रही हूँ तो वो मेरा गुरु तो मैं बना लूंगी, पर अब ये जो मैं कर रही तो मगर व्यर्थ तो नहीं, जल्दी से करना है, जल्दी से करना, वही है। व्यर्थ तो नहीं जाएगा, बस वो पूछना व्यर्थ तो नहीं जाएगा, मगर जल्दी ये करना जरूरी है। ओके जितना जल्दी करिए उतना अच्छा है। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, आपको ही गुरु, आपको गुरु बना लेती हूँ मैं। गुरु नहीं हूँ मैं तो गृहस्थ आश्रम में है, मैं गुरु का लायक नहीं हूँ अभी तक, योग्यता नहीं, अभी तक योग्यता नहीं। हरे कृष्ण। नहीं, मैंने मन से लोकनाथ स्वामी जी को गुरु बनाया हुआ है, मन से। वही ये शिक्षा गुरु हो सकता है, मगर वो भी लायक नहीं अभी तक। आप शिक्षा गुरु हो हमारे, दीक्षा गुरु हम उनको बनाएंगे, लोकनाथ स्वामी जी को। हरे कृष्ण। चलो अभी आगे हम लोग श्लोक देखने के पहले कीर्तन के लिए कोई रेडी है? आज कौन है नेक्स्ट वाला कीर्तन वाला? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ कौन? मेरे प्रभु, मेरे I प्रभु, can't hear. मेरे प्रभु है प्रभु। करने दो, शुरू करना। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। Prabhu, we are audible, right? Yes. Thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Krishna. Shaping it another Kirtaniya. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Daughter training parents, huh? No, Prabhuji. They already Correct. know how to sing. Amma, next sloka, Amma. Hare Krishna. शुकोवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्युगक्षये विहर्तु कामः प्रलया नवे अब्रविच शिशुश्रूर एकांत जनप्रिय प्रियम विघ्नेश्वरी. Hare Krishna Prabhu, word by word and translation by Srila Prabhupada. Shri Sukha Vacha, Shri Sukadeva Goswami said, Iti thus, Brahvanam, speaking like that, Nirpatim, unto the king, Jagatpatihi, the master of the entire universe, Satyavratam, unto Satyavrata, Matsyavapu, the Lord who had assumed the form of a fish, Yugashaya, at the end of a yuga, Viharatu Kamaha, to enjoy his own pastimes, Pralaya Arnave, in the water of inundation, Abravit said, Chikurshuhu, desiring to do, Yekanta Jana Priyaha, most beloved by the devotees, Priyam, something very beneficial. Sukadeva Goswami said, when King Satyavrata spoke in this way, the Supreme Personality of Godhead, who at the end of the Yuga had assumed the form of a fish to benefit his devotee and enjoy his pastimes in the water of inundation, responded as follows. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो यहाँ देख सकते हैं जैसी उन्होंने स्तुति किया है, छोटा सा स्तुति में बताया ना, इसमें 4-5 श्लोक है, ज्यादा नहीं है. उनको कह सकते हैं हम लोग सत्यव्रत स्तुति बोल सकते हैं. ठीक है. अभी भगवान उन्होंने कम मुख खोल के अभी बताने वाला है. श्री भगवान उवाच सप्तमे ही अद्यतनाथ ऊर्ध्वम अहन्येतत् अरिन्दमा निमंक्षस्ति अप्यया बोधौ त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्.
नहीं है, दीपक चला गया। चंचल माता जी। प्रभु जी आवाज नहीं है। ओ, चंचल माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। हाँ, शब्दार्थ एंड अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, सप्तमे सातवें ही निसंदेह अध्यतनात् आज से ऊर्ध्वम आगे अहनि दिन में एतत् यह सृष्टि अरिमदम हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा निमंशति जल में डूब जाएगी। अपयय अम्बोधो प्रलय के सागर में त्रैलोक्यम तीनों लोग भू भुव आदिकम भूरलोक भुवरलोक तथा स्वर्गलोक। भगवान ने कहा, हे शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज से सातवें दिन भुव तथा स्वह ये तीनों लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा, O king, who can subdue your enemies? On the seventh day from today, the three worlds, Bhuv, Bhuvaha, Suvaha, with all merge into the water of inundation. क्या लिखता है? हाँ, भगवान, ओ किंग हु कैन सबड्यू योर एनिमीज, मतलब वो प्राचीन काल में जो राजा बोलेगा तो अपना शत्रु को उन्होंने जीतने वाला है, इसलिए लिखा है वो सबड्यूअर ऑफ योर एनिमी। सातवां दिन आज से लेकर तीनों लोग अभी क्या हो जाएगा? भूहु भुवः स्वः, तीनों क्या हुआ? एक प्रलय में अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर। त्रैलोक्यम लीयमानायां सततं बसि वै ददा उपस्थास्यति नौ कश्चित् विशाला त्वं मयेरिता। हरे कृष्णा। साची का माँ। उमेश माता जी क्या हो रहा है? She's not coming. हर्षल माँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ओके। शब्दार्थ, त्रिलोक्याम तीनों लोगों, लयमानायाम जलमग्न हो जाने पर, संवर्त अंबसी प्रलय के जल में, वही निस्संदेह तदा उस समय उपस्थास्यति प्रकट हो गई नौ नाव काचित एक विशाला बहुत बड़ी त्वाम तुम्हारे पास मया मेरे द्वारा एरीता भेजी गई। अनुवाद, जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। हरे कृष्णा। There's no purport to this, right? या Okay, हरे कृष्णा। यहाँ ये तीनों क्या हो जाएगा? पानी के अंदर डूब जाएगा, उसी समय एक नाव आ जाएगा आपका सामने। भगवान इसी उनको कहता है। नेक्स्ट पढ़िए माँ। तम तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च सप्तर्षिभिः परिवृतः सर्वसत्त्वोपबृंहितः आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यस्विक्लवः एकार्णवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसा। जय हो। चाची का मम्मी रेडी है अभी? दिखाती नहीं आती। ओके, now who has not got a chance, let's quickly go. संध्या माता जी।
Hare Krishna Prabhu. Synonyms. Tavam, you. Tavat, until that time. Oshadaha, herbs. Sarvaha, all kinds of. Bijani, seeds. Ucha, avachani, lower and higher. Cha and Sapta Rishibihi, by the 7 rishis. Priyavrataha, surrounded. Sarva Sattva, all kinds of living entities. Ubha Brahmihitaha, surrounded by. Arukhya, getting on. Brihatim, very large. Navam, boat. Vicharyasyasi, shall travel. Aviklyavaha, without moroseness. Ekarnave, in the ocean of inundation. Niraloke, without being illuminated. Rishinam, of the great rishis. Eva, indeed. Varshachasa, by the effulgence. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Thereafter, O king, you shall collect all type of herbs and seeds and load them on the great boat. Then, accompanied by the 7 rishis and surrounded by all kind of living entities, you shall get aboard that boat, and without moroseness, you shall easily travel with your companions on the ocean of inundation, the only illumination being the effulgence of the great rishis. Hare Krishna Prabhu, thank you. Hare Krishna. Thereafter, O king, you shall collect all type of herbs and seeds and load them on the great boat. Then, accompanied by the 7 rishis and surrounded by all kinds of living entities, you shall get aboard that boat. And without moroseness, you shall easily travel with your companions on the ocean of inundation, the only illumination before the effulgence of the great rishis. So it's very clearly mentioned here how the Lord is instructing him. आपने ये पूरा जितना भी औषध है उसको कलेक्ट कर लो, बीज भी कलेक्ट कर लो, वो नाव में लोड करके ले जा. देन अकम्पनीड बाय सप्तऋषि के साथ और सारी जीव जाल के साथ आप क्या करना, वो नाव में आप भी चढ़ो. आप विदाउट मोरोसनेस, मतलब आप दुखित नहीं होना चाहिए. यू शैल ईजिली ट्रैवल with your companions on the ocean of inundation. I see इतना जल में आपको आप बहुत आसानी से पार कर सकते हैं. Inundation मतलब पानी इतना बहती है उसी में. The only illumination being the effulgence of the सप्तऋषि. वहाँ तेजस के लिए कौन है? ये सप्तऋषि आता है, उनका प्रकाश से आपको देख सकते हैं, आप नाव को चला सकते हैं. So this means the Lord has got a pre-planned program, right? See, I'll tell you. When it comes to the avatars, there are n number of things. Especially, that's why he says, Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam. The primary purpose of avatar is one, to protect the devotee. The second is to destroy the atheistic. But at the same time, the Lord has got another set of always reasons. That's why whenever he comes, he executes so many things one at a time. So that means he is having the capability of multitasking. That's why every time when he comes, different activities. If you look at the Kunti Stuti also, wherein Kunti Maharani is telling, some are telling you have come to glorify the Vrishni dynasty. Some are telling you have come to re-establish the Dharma. Some are telling you have come to destroy the burden of the earth. Like this, n number of reasons. There will be 3 or 4 slokas. Like this, there will be so many slokas. All the slokas, Kunti Maharani is telling, each and everyone says so many reasons. But ultimately, the Lord executes it with a pre-plan. What is it called in Hindi? Sankalpa. क्या है? संकल्प. हमारे जैसी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है. So तुरंत उनको कुछ कर सकते हैं क्योंकि शक्ति तो विविध प्रकार. So that means it is understandable the most powerful or the supreme personality of Godhead can execute all these things without any difficulty. So here he is instructing Satyavrata Raja, please do it accordingly and you need not worry about it.
क्योंकि 3 लोगों तो पानी में डूब गया तो क्या हो जाता है, पूरा अंधेरा आ जाता है। इसको क्या कहता है, प्रलय होता है। महाप्रलय आएगा तो क्या हो जाता है, सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। So it's very difficult to understand how these things happen, right? अभी देखिए ये एक महामारी आया, किसी को मालूम नहीं है ये कैसे आया, कैसे हटा, संभव ही नहीं है, इसमें बचना भी मुश्किल है इसमें से। So like this, there are so many wonderful things which we have to understand. The Lord's arrangements are simply beautiful. On all that, you have to wait for it, and one can achieve real success by taking the shelter of the lotus feet of the Lord. But one has to have, what is that? Tolerance. What is the tolerance? Tolerance means one has to be very, very calm and cool. But one has to be calm and cool means they have to really understand the situation. The Lord will come and give the clue. Wait for it. That's it. Until then, worship the Lord non-stop with joyful condition, right? So we have to remember the clue comes from the Lord. सलाह देने वाला कौन है? भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवान हृदय में विराजमान है, हर वक्त हमको सलाह देते रहता है. He is always giving advices. All that you have to take it. That's it. Nothing else. So this Leela continues wherein Lord incarnation of fish is explaining to Satyavrata Raja. Next पढ़ियो. दोदूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा स्वस्ति तस्य मे संगे निबध्नीति महाहिना. ओके, विद्याकृति. हरे कृष्णा. शब्दार्थ अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा. तोद्य आनाम डगमगाती तामो ताम उस नावम नाव को समीरेन आवासे बलीयसा शक्तिशाली उपस्थितस्य पास ही उपस्थित मैं मेरे श्रृंदे सिंह में निबद्धनी बांध देना महाआईना महान सर्प वासुकी से. अनुवाद प्रभुपाद के द्वारा. जय श्री प्रभुपाद. तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे तुम उसे महान सर्प वासुकी से द्वारा मेरे सिंह से बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूंगा. हरे कृष्णा. एनी तात्पर्य इज देयर? No. Okay, thank you. So here you can understand one thing. यहाँ भगवान आगे उनको कैसे सलाह देता है. He is advising, do not worry about it. उसी समय पे इतना हवा होगा, तूफान होगा. So at that time there will be heavy winds and the boat will be tossed ups and downs, right? उसी समय पे कौन सुरक्षा करने वाला है? कोई नहीं है, right? कौन है उसके अंदर? औषध है, बीज है, सप्तऋषि है, सभी प्रजा है, सबको भी सुरक्षा करने का है. यहाँ भगवान क्या सलाह देता है? All that you tie that boat to my horn. क्योंकि हमेशा मछली को हॉर्न होता है ना, ऐसी हिंदी में क्या बोलते हैं हॉर्न को? सिंग. हाँ, सिंग से बांध लो. He's asking to tie the Vasiki Sarpa to the horn of the fish. So again Vasiki comes to the Leela. Every time Vasiki comes. Who is that Vasiki? नाग. वासुकी नाग, शेष नाग. मगर कहाँ से रेफरेंस है? प्रभु लीला से. मेरू पर्वत को बांधा था. ठीक है, दो आवाज आ रहे हैं, समझ में नहीं तो कौन बात कर रहा है? एक तो बिंदु माता जी बोल दिया और दूसरा कोई बोला था, वो कौन है? अंकित प्रभु तेजस्वी. अंकित बोलो, क्या बोल रहा था? कालिया दमन लीला से शायद. कौन सा लीला?
वो कालिया दमन वाला लीला था ना, कृष्णा का बचपन का। वहां नहीं नहीं, ये समुद्र मंथन, समुद्र मंथन वाला वासुकी जी। हरे कृष्णा समुद्र मंथन में जो आया वाला, है, जो मेरू पर्वत से लाके मंथन किया था। churning the ocean time, the Vasuki came. Now also the Vasuki comes. But who is that Vasuki? What is the reference in the scripture? वासुकी भूल गया, सब लोग भूल गया, मैं अभी बताता हूँ। भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहता है सर्पाणाम अहम वासुकी। Can anybody take the shloka? Krishna says, among the serpents, I am Vasuki. That's why here he is instructing Satyavrata Raja to catch hold of the Vasuki and tie the boat with his horn so that nothing happens to the boat. Shloka Mila? Sandhya? Prabhu 28. 10:28. Yeah. Okay. Can you get it, Devan? 10:28, Bhagavad Gita. Got it? आयुधान महम प्रजम तेनुना अस्मि कामधूक प्रजनाश्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। धन्यवाद माता जी। अभी अनुवाद करने के लिए मैंने श्याम सुधीर को बुलाता हूँ। श्याम सुधीर, read the translation. श्याम सुधीर. Of weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the Surabhi. Of causes for procreation, I am the Kandarpa, the god of love, and serpent of I am Vaski. हरे कृष्णा। क्या बता रहा है? सर्पेंट्स में मतलब सर्प में मैं वासुकी हूँ। So that's why Vasuki is a partial representation of God. So like this, there are so many. In Bhagavad Gita, Bhagavan says, especially this is called Vibhuti Yogam. Vibhuti Yogam मतलब भगवान का विभूति किधर किधर है, सब जगह पे फैला। सब कुछ तो भगवान से उत्पन्न हुआ है। So everything emanates from Krishna and everything is part and parcel of the Supreme Lord. But certain are highly placed. So here Vasuki is placed highly because it is among the serpents the topmost. So like this, all these are only a spark. वासुकी बोलेगा तो एकदम बड़ा नहीं, उससे बढ़कर और है। क्योंकि इसलिए भगवान क्या कहता है, यद्यद् विभूतिमत् सर्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। तो इसका मतलब क्या है? In this sloka, again he says at the end, 10th chapter. Can you take it? Yadyad vibhutimat sarvam. I think so 10:54 or something. Check it out. So what he says, you can see so many sparkling things, but do not forget all the sparks is only a small, minute portion of my energy. No. 10th chapter. No, not Bhāgavata. I said Gita, 10th chapter, shloka number 8, got it. Can anybody get that? Yadyad vibhutimat sarvam shrimad urjitameva, 10th chapter, Bhagavad Gita. Anybody got it? Bhagavad Gita, 10th chapter, shloka starts with Yadyad vibhutimat sarvam. What is the number? 10:41. 41. Vidyagati got it. Can you get the shloka again in the same chapter? Yadyad vibhutimat sarvam shrimad urjitameva va tattadeva avagachatvam mama tejo amsa sambhavam. So again, Bhagavan says, it is only a spark of mine. इसका मतलब समझ लो, ये
मेरा स्पार्क है। So the translation, know that all opulent, beautiful, glorious creations spring from but a spark of my splendor. क्योंकि भगवान का विविध प्रकार का शक्ति से बहुत कुछ, राइट, मगर इसमें कोई कोई तो थोड़ा चमकता है, राइट, कोई कोई तो इतना धनी है, अंबानी, बिल गेट्स, मगर क्या है, ये तो एक अंश है। क्या कहता है भगवान ने? स्पार्क, इट्स ओनली अ स्पार्क, इट्स नॉट द रियल फुल। So that means, but we are thinking he is glorious, he is so much wealthy, all blah 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 thing, because he is only a small atom. Okay, I'll tell you in this connection one interesting thing. Prabhupada always says, see, many times we think we are very big, we know everything, हम लोग सब जानता है, हमसे बढ़कर और कोई जानकारी नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ, सब सब्जेक्ट में इतना निपुण हूँ, ऐसे बहुत हम लोग सोचता है। क्या है? मिथ्या अहंकार। उनको इतना ही समझाने का है। एक व्यक्ति है, वो क्या है? एक घर के अंदर है, राइट, वो घर कहाँ है? एक एरिया के अंदर, वो एरिया के अंदर है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एक स्टेट के अंदर है, एक स्टेट के अंदर है, एक देश के अंदर है, एक देश क्या है? एक इतना बड़ा कॉन्टिनेंट के अंदर है, राइट, एक कॉन्टिनेंट क्या है? इतना बड़ा भूलोक के अंदर है, भूलोक क्या है? एक मंडल है, एक ब्रह्मांड के अंदर है, एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसी अनेक ब्रह्मांड है, राइट। इसमें हम लोग कैसे बोल सकते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, मैं ऐसी सोच सकता, ये गलत है। सो ऑल दिस बिकॉज वी हैव द फॉल्स ईगो। We should remember, we are only a tiny part of it, and we claim we are the great. It's really illusion, and it's really foolishness. So they should understand. You look at the creation, such a huge one, right? After that, you are only a tiny part of it. एक अणु है, मगर हम लोग सोचते हैं हम विभू करके। This is wrong. Clear? Chapter number 36. No, my dear, 36. Ma? Ma? Yeah. No. Tie it to the great. Okay, sir. Okay. Sloka 37, I have to go. Okay, thank you. Sometimes I am stuck in some other sloka. Aham tvam rishibhihi sardham saha navam udanvati vikarshan vichashya ami yavate brahmi nisha prabho. Okay, Bhāgavata Prabhu. Bhāgavata. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। शब्दार्थ बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। अहम त्वाम तो ऋषि भी सारे ऋषियों के सार्धम स ये युक्त नावम नाव उदन्विति प्रलय के जल में विकर्षण खींचते हुए विचरिष्यामि करो यावत तक ब्रह्म की निशात्री हे राजा। अनुवाद, हे राजा, नाव में बैठे तुम तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूंगा तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। यह विशेष वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि नहीं अपितु उनके दिन के समय हुई थी, क्योंकि यह घटना सूक्ष्म के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से एक चाक्षुष मनु है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को टीका है कि यद्यपि ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। थोड़ा सा समय ब्रह्म की रात्रि माना जाता।
श्रील गोस्वामी ने अपने लघु भावना मृत में इनकी विस्तार से विवेचना की है, जिनका सारांश इस प्रकार है। जिसका सारांश इस प्रकार है। हरे कृष्ण। अगस्त मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुई। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में है। भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरी प्रलय, जिनका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यक नहीं होती है। तो चाक्षुष मनवंतर के अंत में भगवान अपनी मां से व्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। श्रीधर गोस्वामी भी इस मत से सहमत है। लघु भागवत में कहा गया है। हरे कृष्ण। पढ़िए। मध्य मनवंतर ने शापान प्रयो असौ भवति पुराणे क्वचिदीर्यते अयम आकस्मिको जात प्रभु मैं पढ़ रहा हूँ पूरा श्लोक है, ठीक है? ये पूरा श्लोक है, मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। मध्ये मन्वन्तरस्यैव मुने शापान मनुं प्रति प्रलयोऽसौ बभूवेति पुराणे क्वचित् ईर्यते अयम् अक्षमिको जातः चक्षुषस्यांतरे मनोः प्रलयः पद्मनाभस्य लीलयेति च कुत्रचित् सर्वमन्वन्तरस्यान्ते प्रलयो निश्चितं भवेत् विष्णु धर्मोत्तरे तु एतत् मार्कण्डेयेन भाषितं मनोरन्ते लयो नास्ति मनवे अदर्शि मायया विष्णु नेति ब्रुवानस्तु स्वामिभिः नैषमन्यते। ओके, ये तात्पर्य का बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ याद रख लो। इसमें बहुत कुछ हम लोगों को जो भी संदेह आने वाला है सबको स्पष्ट करने वाला है। So what he is telling now? Guruji. Yes, please. I'm Nishika. Actually, Hare Krishna. So I couldn't hear you at that time, so I couldn't read it. Sorry, I'm really sorry about that. No problem, Nishika. Wait here. I'll give you another chance. Next Guruji, I'm actually having tuition right now, 6:55. So. Okay, carry on. So if you come back, it's okay and well and good. Thanks for participating. Keep attending regularly. Thank you, Guruji. Hare You're Krishna. in which grade? You're in which grade? 9th grade, Guruji. Wonderful, wonderful. Keep attending. There are lots of classes for children also. You can participate. I'll take other details from your father. Okay? Okay, Guruji. Hare Krishna. So let us try to understand the points here. भगवान ने क्या कहा आगे इनको? Pulling the boat with you and all the rishis in it, O king, I shall travel the water devastation until the night of Brahma's slumber is over. Okay. So imagine that Lord's performance. This is called Urukramasya Kila Guru. Because whatever he performs, it's uncommon. You cannot imagine that. What does he say? Pulling the boat with you and all the rishis in it, O king, I shall travel in the water of devastation until the night of Lord Brahma's slumber is over. अभी देखिए
एक रात बोलेंगे तो कितना कल्पांत है, अनेक है, राइट। उसमें अनेक वर्ष है। ऐसी ही उन्होंने क्या हुआ, पूरा पानी से भरा हुआ है। उसी समय रात बोलेगा तो किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, मगर मछली को तो आंख बराबर रहता है रात को भी, राइट, पानी के अंदर भी। इसलिए यहाँ वासुकी के साथ बांध के रखा है जो नाव को। अभी खींचने वाला कौन है, मत्स्यावतार। So the Matsya incarnation, the fish incarnation, now it's going to pull the boat, which is loaded with Saptarishi, with the king Satyavrata, with all the aushadas, all the medicines, all the seeds, and all the prajas. So it has got heavy load, and there is so much of wind, and the boat is really struggling here and there. At that time, what he said, catch hold of the Vasuki, tie the boat to the horn of the Matsyavatar. So what he says further, I will drag it throughout the night. See the photo here, it's wonderfully described. Huh? So who is pulling that? Matsyavatar is pulling the boat. You can see the Vasuki is tied to the horn and to the boat. अंधेर है, मगर कहाँ से प्रकाश निकलता है, सप्तऋषि से प्रकाश निकलता है। हरे कृष्णा। ये मत्स्यावतार। Okay, Prabhupada, the purport is giving so many wonderful information. We will try to understand one by one. The particular devastation actually took place not during the night of Lord Brahma, but during his day. For it was during the time of Chakshushu Manu. Right, understand, until the night. Until the night means till the night, not in the night. You have to understand that. That's why Prabhupada is writing this. The particular devastation actually took place not during the night of Lord Brahma, but during his day. So, din bhar ke unhone kheench lete hain. For it was during the time of Chakshusha Manu. Brahma night takes place when Brahma goes to sleep, but in the daytime there are 14 Manus, one of whom was Chakshusha Manu. Therefore, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur comments that although it was daytime for Lord Brahma, Brahma felt sleepy for a short time. Like us, right? We take some small nap, right? Huh? वो लोग क्या कहते हैं? Nap. Nap. कुछ बोलते हैं. I forgot the word. Snap. I like that. So we take a small nap. यहाँ ब्रह्मा जी क्या किया, उनको नींद आ गया, उन्होंने थोड़ा समय के लिए सो गया। So power nap. पावर, हाँ, अच्छा सही बोल रही है माता जी। सही शब्द उपयोग किया आपने। आप लेती है? हाँ माता जी। नहीं, हाँ मैं भी लेती पावर नैप। Wonderful. यहाँ ब्रह्मा जी को ऐसी नींद आ गया, इसलिए उनको क्या लिखा है, रात का लिखा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनको टीका देता है। Felt sleepy for a short time by the supreme will of the Lord. किसके वजह से? भगवान का इच्छा के वजह से। So that means the Lord plans everything. See, this is what I am repeatedly telling you. Many things we cannot understand why it happens to us. Many things we will not be able to understand why it is going on like this. All this because the Lord has a wonderful plan. Unfortunately, you can understand. अगर हम लोग रोते रहेंगे, इतना प्रयत्न करते रहेंगे, अगर रजोगुनी होगा तो, अगर भक्त होगा तो क्या करेगा, भगवान का नाम पुकारते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So you can understand the Lord's leelas are unlimited and each and every time ठीक है. अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सीधा बता दिया वो दिन है, मगर बीच में उनको नींद आ गया ब्रह्मा जी को. किसके वजह से नींद आया? भगवान के इच्छा की वजह से. ठीक, इसलिए रात बन गया. ये कभी हुआ है? एक चक्षुषु मनु का समय पे. That short period is regarded as Lord's Brahma's night. This has been elaborately discussed by Srila Rupa Goswami Laghu Bhāgavatam. ऐसी भागवतम पढ़ने के लिए हम लोगों को कितना साल चाहिए?
समझो। अभी भागवत लघु भागवत अभी और अंदर है, बहुत सुंदर है। So we can understand how important it is. That's why Prabhupada is always giving so much of importance to all these things. One must be able to keep on reading it without fail. This is very important. So we have to understand how to handle this, right? आगे लिखता है यहाँ तो, this short period is regarded as Lord Brahma's night. This has been elaborated by Supa Goswami in Laghu Bhāgavata. The following is the summary of his analysis. क्योंकि वहां रूप गोस्वामी ने विस्तार से जो समझाता है वो तो किसने टिप्पणी दिया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टिप्पणी दिया है। What does it say? The following is the summary of his analysis. Because Agastya Muni cursed Swayambhu Manu during the time of Swayambhu Manu, a devastation took place. This devastation is mentioned in the Matsya Purana. क्या हुआ? स्वयंभू मनु ने एक बार अगस्त्य मुनि को अपराध किया है, उन्होंने उसी समय स्वयंभू मनु को श्राप दिया है। किसने दिया था? अगस्त्य मुनि। ऐसी अगस्त्य मुनि का श्राप की वजह से इनको क्या हुआ? The devastation was mentioned. स्वयंभू मनु का समय पे ये प्रलय हुआ है। ये प्रलय के बारे में विस्तार से लिखा है मत्स्य पुराण में। During the time of Chakshusha Manu, by the supreme will of the Lord, there was suddenly another pralaya or devastation. मैं बताया ना, ऐसी छोटा प्रलय बहुत कुछ आता है, मगर जब ये लास्ट में जो आता है महाप्रलय, वो तो सब कुछ उसमें संहार हो जाता है। So we have to understand all these things are explained very well in the Bhagavatam. But how to understand? One has to keep reading it and understanding it. Being the time of Chakshusha Manu, by the will of the Supreme Lord, there was suddenly another pralaya devastation. Then after that, during the time of Chakshusha Manu, by the Supreme Lord, there was suddenly another. So another devastation take place, and that is also, this is mentioned by Markandeya Maharishi. What is that? This is mentioned by Markandeya Maharishi in the Vishnu Dharmottara. At the end of the Manu's time, there is not necessarily a devastation. इसका मतलब मनु का अंत समय पे और एक प्रलय नहीं हुआ है. So we can understand how these are arranged by the Lord and how it is happening. Okay, coming back to the next one. Markandeya Maharishi in Vishnu, at the end of the Manu, there was not necessarily a devastation, but at the end of the Chakshusha Manvantara, स्वयं मनु का अंत में प्रलय नहीं था, उसके बाद चक्षुषा मनु का समय पे ये प्रलय आ गया, ऐसे लिखता है. So the Supreme Personality of Godhead, by his illusion, wanted to show the Satyavrata the effects of devastation. ये देखो, ये राजा का इतना शक्ति है. ये तो कहाँ का राजा है? द्राविड़ देश. द्राविड़ देश का राजा है, मगर इनका भक्ति को भगवान ने इतना स्वीकार किया है, उनको दिखाया ये प्रलय के बारे में. इसलिए स्वयं मनु का समय भी जो होने का है वो नहीं हुआ है, उसके बगैर चक्षुषा मनु का समय भी हुआ है. जैसे ब्रह्मा जी का दिन में उसी समय उनको नींद आ गया, नींद का बीच में ये प्रलय हुआ है, मगर दिन है, रात नहीं है ब्रह्मा का. ठीक है. So these are the things we have to understand. Wanted to show the Satyavrata the effects of devastation. Srila Sridhara Swami agrees with his opinion. इसका जैसी रूप गोस्वामी का जो लिखावट है उसका अंदर ये श्रीधर स्वामी भी उसको अग्री कर रहा है. So this is explained in the लघु भागवतामृता.
नेक्स्ट श्लोक मध्यम महिमानम अमा माता जी ओके परिपूर्ण माता जी ओके मध्यम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यसि अनुगृहीतं मे संप्रश्नैः विवृतं हृदि। हरि प्रिय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। पढ़िए। हाँ शब्दार्थ जय श्री प्रभुपाद कीजिए। मध्यम मध्यम महिमान चो तथा परम ब्रह्म 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 परम सत्य इति इस प्रकार सब सप्तिद्यम शब्दितम विख्यात वेत्स्यसि तुम अनुग्रह कृपा पाकर मैं मेरे द्वारा प्रसन्नों के द्वारा विवृतम पूर्णतया व्याख्या हृदय में उदाहरण तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा। जय शीला प्रभुपाद। मैं ठीक से सलाह दूंगा और तुम्हारा पक्ष भी और मुझ पर ब्रह्म की महिमा में तुम्हारी जिज्ञासाओं के कारण हर बात तुम्हारे हृदय के भीतर प्रकट होगी। इस तरह तुम मेरे सब कुछ जान सकोगे। जय शीला प्रभुपाद। जय भगवद गीता 15.15 में कहा गया है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतम अपोहनम च। परमात्मा सबों के हृदय में है और उन्हीं से स्मृति तथा ज्ञान तथा विस्मृति है। जितना शरणागत होता है उसी अनुपात में भगवान अपने को कृपा करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्थैव भजाम्यहम्। आदान प्रदान के सहयोग में भगवान मनुष्य की शरणागति के अनुपात। प्रभु जी थोड़ा ऊपर हरे कृष्ण। शरणागति के अपने प्रकट करते हैं। जो पूरी तरह शरण में आता है उसे मानसिक शरण में आने वाले की तुलना के में भिन्न रूप से प्रकट किया जाता है। हर व्यक्ति स्वभावतः प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की शरण में जाता है। संसार में प्रकृति के नियमों के प्रति भौतिक रूप में से आत्मसमर्पण करता है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भगवान की है भौतिक प्रकृति कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे पूर्ण शरणागत व्यक्ति पर भगवान कृपा करते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम रतन्ति ते। जो पूर्णतया भगवान के जाता है उसे प्रकृति के गुणों का भय। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा ऊपर कीजिए प्रभु जी। नहीं रह जाता क्योंकि हर वस्तु भगवान हरे कृष्णा का विस्तार मात्र है। सर्वम सल्लिवदम ब्रह्म और ये सर्वम खलुमिदम प्रभु सर्वम खलुमिदम ब्रह्म और ये
महिमाएं क्रमशः प्रकट हो और अनुभव की जाती है। भगवान परम शुद्धि करता है। परम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परम भगवान। जो जितना ही पवित्र हो जाता है, ब्रह्म के बारे में जितना अधिक जानना चाहता भगवान उसके समक्ष उतना ही अधिक शुद्ध भक्तों को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान का पूर्ण ज्ञान प्रकट किया जाता है। भगवद गीता 10.11 में कहते हैं, तेषाम कंपार्थ अहम अज्ञान जम तम नाशमात्म भाव सुतो। मैं उन पर कृपा उनके हृदयों में बस कर ज्ञान के चमकते हुए दीप से अज्ञान जन्य अंधकार को विनष्ट कर देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, आपका पीछे कुछ ना कुछ आवाज आते रहते हैं, ये संभालना पड़ेगा। आप जैसे पढ़ते हैं ना जी। हरे कृष्ण। ठीक है, ये श्लोक 38 में ट्रांसलेशन में, यू विल बी thoroughly advised and favored by me। यहाँ भगवान मत्स्यावतार ने सत्यव्रत राजा को बताता है, थ्रू आउट आई विल बी गिविंग द एडवाइस एंड फेवर, मतलब सलाह देते हुए साथ साथ सहायता भी करेंगे। बिकॉज ऑफ योर इंक्वायरीज एवरीथिंग अबाउट माई ग्लोरीज विच आर नोन एज परम ब्रह्मा विल बी मैनिफेस्ट विद इन योर हार्ट। तो इन्होंने इतना भगवान के बारे में जानने के लिए कोशिश किया है, इसलिए भगवान कृपा करके उनको सारी ज्ञान अपने आप स्वयं आके उनको प्रदान करता है। सी, हम लोग देखते हैं ना, 4 प्रकार का भक्त कौन है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। यहाँ केशव भारती वहां सेवा करके करके बीच में उत्तर भी देता है। सो आर्तो जिज्ञासु, यहाँ जिज्ञासु ज्यादा है किसको? राजा सत्यव्रत को। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? which are known as Parabrahma, and how it happened? Because of your inquiries, because he wanted to know about the Lord's glories. हम लोग को तो इतना इच्छुक है क्या? बहुत कम है। अभी देखिए ये भागवत कथा में जैसी सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा बता रहे, बीच बीच में क्या कर रहा है सुखदेव गोस्वामी? कुछ बोल के ऐसी आगे जाता है, मगर क्या करता है यहाँ इतना श्रद्धा पूर्वक सुनता है परीक्षित महाराज, उनको रोके उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बता दो। यहाँ भगवान ने क्या क्या लीला किया है, यहाँ असुर नौकों को क्यों दंडित किया है, यहाँ भक्त को एक क्यों कृपा किया है। इसका मतलब हर वक्त हम लोग जैसी भागवत सुनता है संपूर्णता श्रद्धा पूर्वक सुनना जरूरी है। So here also he was very much serious in inquiring about the Lord's glories, which is known as Parabrahma. Parabrahma, the ultimate, that is the topmost, and it's beyond our understanding. Will be manifest within your heart. आपका हृदय के अंदर प्रवेश करेगा, manifest, sorry, प्रकट हो जाएगा। Thus you will know everything about me. यहाँ भगवान क्या कहता है? सारे मेरा ऊपर विषय आपको उसी समय स्पष्ट हो जाएगा। Purport is also amazing, है? प्रभुपाद जो लिखता है इसमें इतना विषय है, देखेंगे एक एक करके। सर्वच्च साहम हृदय सन्निविष्टो, हर एक का जीव जाल के अंदर हृदय में भगवान निवास है। मगर उन्होंने क्या करता है? हर वक्त उन्होंने सलाह देते रहते हैं, क्योंकि हम लोग देखा है श्वेतावतार उपनिषद में एक बड़ा वृक्ष है, उसके ऊपर 2 पक्षियां हैं, एक तो घूमते रहते हैं, दूसरा तो देखते रहते हैं। So like that the Lord is present and he is always watching. मगर ऐसी क्या कर रहे उन्होंने? साथ साथ उनको सलाह देते रहते हैं। So every heart and from him knowledge and forgetfulness. The Lord reveals himself in proportion to the one surrender. ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम् मतलब भजना। भगवान को जितना बजता है भगवान हमको समझाता है अपना ग्लोरिफिकेशन के बारे में। सो आगे क्या लिखता है? In responsive cooperation, the Lord reveals himself in proportion to one surrender.
आदान प्रदान करने में भगवान एकदम श्रेष्ठ है। जैसे हम लोग सरेंडर करते हैं वैसे हमको प्रदान करते हैं ये ज्ञान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड that which is revealed to one is fully surrendered to the Lord. What is revealed to the surrendered partially. इसका मतलब जो आधा समर्पण किया है उसको आधा ही भगवान का जानकारी हो सकता है, और जो भी पूर्ण तरफ से उन्होंने भगवान को जानने के लिए कोशिश किया, भगवान उनको सारी विषय समझाता है। यहाँ सत्यव्रत राजा ने भगवान को प्रशंसा को पूरी तरह से जानने के लिए इच्छुक था, इसलिए यहाँ भगवान उनको पूरी तरफ से पूरा ज्ञान प्रदान करने वाला है। Everyone actually surrendered to the Supreme Personality of God, either directly or indirectly. The continuation soul surrenders to the Lord of the nature, existence, but one who fully surrenders to the Lord, the material nature does not act upon him. प्रभुपाद यहाँ भी बताते हैं, भगवद गीता भगवान स्वयं कहते हैं जो भी देवता को पूजन करता है, मगर वो जो करता है अविधि पूर्वक, हम बोलते हैं क्या है, विधि पूर्वक नहीं है, अंत में उनको जो भी प्राप्त होता है मेरे से उनको प्रदान होता है। That means we have to understand whatever we get it through the devatas is also sanctioned by the Lord himself, right? But when it is rooted through the devatas, it becomes short-lived. So we can understand how the Lord is explaining further. What does he say about it? The conditioned soul surrenders to the law of nature, the material existence, but when one fully surrenders to the Lord, material nature does not act upon him. ऐसे भगवान को पूरी तरह से समर्पित किया है, उनको ऊपर ये भौतिक प्रकृति स्पर्श नहीं कर सकते हैं। Such a surrendered soul is favored by the Supreme Lord. मामे प्रपद्यन्ते माया मेतम करते। इसका मतलब वो व्यक्ति को क्या, वो भक्त को क्या कर सकते हैं, ये माया का प्रभाव को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं क्योंकि भगवान का सहायता के साथ, right? So this is the way it is explained further. One who is fully surrendered to the Lord has no fear of the material nature, for everything is but an expansion of the Lord's glory. सर्वम खलुविदम ब्रह्म, क्योंकि सब कुछ जितना भी हम लोग देख सकते हैं ये भगवान का ही है, हम लोग बोलना नहीं चाहिए। So this is very important for us. Hare Krishna. So we can understand the importance of this particular line, right? So one has to surrender fully to the Lord, then automatically the Lord's expansion can be easily understood. So that's why it is written, Param Brahma Parandama Pavitram Paramam Bhava. ये भी 10वें अध्याय में भगवद गीता में भगवान कृष्णा ने अर्जुन को समझाता है। The more one who purified, the more one who wants to know about the Supreme. जितना हम लोगों को पवित्रता होता है उसके बारे में हम लोग भगवान के बारे में ज्यादा जानने के लिए कोशिश करता है। So that automatically once you get purified can understand the Supreme Lord. यहाँ क्यों ऐसे बताता है, देखिए भगवान का विषय के बारे में हम लोगों को जानने के लिए एक ही विषय है। So try to understand, क्योंकि यहाँ क्या बताता है, it's very simple, it's not a difficult thing. What does he say now? The more you want to know, the more you come to know. The Lord gives more and more. So we have to clearly understand how the Lord is very, very, very interactive, right? So you should not get confused at all. So that's why it is written here, as you surrender, as you come to know. क्योंकि भगवान का विषय के बारे में जानने के लिए ये भौतिक कल्मश के साथ भगवान को जानना संभव ही नहीं है। इसलिए जितना पवित्रता होता है उतना भगवान के बारे में हम लोगों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए कृष्ण भावनामृत में जो भी ज्ञान किया है, सबसे पहले प्रभुपाद क्या बताता है, यम नियम बताता है, आगे डूस एंड डोंट्स, उसके बाद आप रोज इतना माला करो, ये करो, एकादशी व्रत रखो, ये ऐसी अनेक तपस्या करो। क्या कारण है, हमारा अंदर इतना भरा हुआ कलमश को सबसे पहले उड़ा के फेंकने का, राइट? ऐसी कलमश निकल गया तो हम लोगों को पवित्रता होता है।
हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, क्या कहते हैं भागवत में, हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, वो जब निकलता है तभी भगवान का विषय अंदर घुस सकता है। So you have to purify yourself. Many people ask, should I chant for the whole lifetime? Yes, not only this lifetime. If it is there one more lifetime, you have to chant. So this is what the chanting process, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत आसानी रास्ता दिखाया है। कलयुग में लोग तो इतना संकट में, उनको बहुत आसानी रास्ता यही बताता है। If somebody is able to do it regularly, the chanting of the holy name of the Lord, the purification process becomes regular. Automatically, once you purified, the understanding about the Lord is much more clear, right? So this is the way, even in our other studies also, what you do, you have to go on a process and it keeps going, okay? आगे क्या कहता है? Full knowledge about the Brahman Paramatma is revealed to pure devotee. कहाँ बताता है? तेषाम एव अनुकंपात, अनुकंप मतलब भगवान विशेष कृपा करता है। किसको करता है? अहम अज्ञान जम तमहा, मेरा ऊपर जो अज्ञान है उसको निकाल देता है। नासियाम आत्मभावस्तु, आत्मा का बारे में जो ज्ञान को प्रदान करने वाला है। आगे क्या लिखता है? ज्ञान दीपेन, ज्ञान का दीप तो जलाया हुआ है वास्तवता। So we have to understand the process of cleansing is important. हम लोग को हमेशा पवित्रता करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग तो इतना कलयुग में बुरा देखे उसका बीच में रहता है। इतना भौतिक जगत तो भरा हुआ है इतना कल्मश के साथ, मगर भगवान को जानने के लिए कल्मश रहित ही कर सकते हैं। क्लियर? हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक अम्मा। इत्थम आदिश्य राजानं हरिर अंतर्दिया यथ सो अनब वैक्षत तम कालम यम ऋषिकेश आदिशत। ओके, साची का मम्मी पढ़ लो, बुला के कहाँ गया, उत्तर नहीं देती है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, हिंदी में। प्रभु हिंदी में। विद्यागति आ गया। हाँ, मदियम, अरे प्रभु और नीचे, हाँ माता जी श्लोका 39। हाँ प्रभु, पर आ नहीं रहा। अभी श्लोका प्रभु सामने कीजिए। हाँ ठीक है। इथम, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिश्य आदेश के देकर राजानम, राजा सत्यव्रत को हरि भगवान अंतर्धित उस स्थान से अदृश्य हो गए। स, वह राजा, तो थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, बहुत छोटा है, वर्ड दिख नहीं रहे हैं थोड़ा, आई थिंक, और वर्ड क्लियर भी लिखे हुए नहीं है, आई थिंक मेरे लैपटॉप में क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, अनवक्षत, प्रतीक्षा करने लगा, तम कालम, उस समय की, यम, जो, ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश ने आदिशत, आदेश दिया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। राजा को इस प्रकार आदेश देने के बाद भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। तब राजा सत्यव्रत उस काल की प्रतीक्षा करने लगा जिसका आदेश भगवान दे गए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऐसे भगवान सत्य राजा को समझा के अंतर्धान हो गया, राइट? देखिए, उतना बड़ा विस्तार रूप धारण करके सब कुछ उनको समझा दिया। समझाने के बाद उन्होंने अंतर्धान किया। देन राजा क्या करना पड़ता था? इंतजार करना पड़ता था वो समय के लिए। कौन सा समय? वो प्रलय का समय। Yes, this is only a show. अच्छा, अभी विद्यागति बोलते हैं ये ट्रेलर है जो हम लोग अभी देखते हैं। रियल फिल्म आपको देख सकते हैं वो कल्पांत में।
हाँ ये अनुमान नहीं कर सकता इसलिए बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 40। मणि माता जी नहीं। हरे कृष्णा माँ। ओके श्लोका संख्या 40। आस्तीर्य दर्पान प्राकूलान कूलान इट इज कूलान प्राकूलान राजऋषे प्राग उदन मुखः निश साध हरेः पादौ चिन्तयन् मत्स्य रूपिणः। मल्लेश प्रभु पढ़िए हिंदी। हिंदी इंग्लिश कौन सा वाला चाहिए मल्लेश? इंग्लिश इंग्लिश प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हाँ पढ़िए पढ़िए। आश्चर्य सर आश्चर्य पढ़िए मल्लेश। Astriya, synonymous by Srila Prabhupada. Then Darbhan, Kusha grass, Prakulanam, the upper portion facing east. Raja Rishi, Satya Vrata, the saintly king. Prakudak Mukha, looking forward toward the northeast. Ishana, Nishada sat down. Hare of the Supreme Personality of Godhead. Padav upon the lotus feet. Chintayan meditating. Matsya Rupinaha, who had assumed the form of fish. Translation by Srila Prabhupada. Jai. After spreading Kusha with its tip pointing east, the saintly king himself facing the northeast sat down on the grass and began to meditate upon the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who had assumed the form of a fish. Hare Krishna, thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा। देखिए भगवान का सलाह सुनकर उन्होंने क्या किया? तपस्या शुरू किया है। कैसे तपस्या शुरू किया है? उन्होंने उत्तर भाग और पूर्व विश्व में नॉर्थ ईस्ट में बैठ के उन्होंने तपस्या शुरू किया। कैसे बैठ के? एक कुशाग्रास के ऊपर बैठ के। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कौन सा रूप के ऊपर? यही मत्स्य अवतार के ऊपर। ओके विद्यागति, if Gita is ready. One minute. चैतन्य, हरिचरण, हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य है? हाँ है प्रभु, इधर ही है। ठीक है, आप उसके साथ बैठ के ये गजेंद्र स्तुति बोलने के लिए बोलो। जी जी पूरा उसको मालूम है ना? हाँ, वो सुको वो आज नहीं मालूम प्रभु, पूरा गजन स्तुति बोलता है। पूरा बोलता है। ठीक है, ये काम करिए, आधा पढ़ने के लिए बोलो, बाकी आधा गीता पढ़िए। हाँ नो प्रॉब्लम प्रभु, जैसे आप बोलेगा वैसे।
कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी, हरिचरण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ स्टार्ट। श्री राजेंद्र मुख्य स्तोत्रम, श्री शिक्षितम श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतैतच्छिरात्मकं पुरुषायादिबीजाय गणेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात्परस्माच्चापरस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेदरुषाशुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्पर कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमास्तदासि गणनां कबीरम् यस्तास्तपाणे विविराजते विभुः नयसदयारुषया तदम्बि जन्तु पुनः कोढति गन्तुमीडितुः यथा नटस्य कृतिभिर्विशेषततो दुराचयानो सबलं तस्मै नमः खडेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये अरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो हिरामिदूराय मनः सच्चेतसामपि सत्त्वेन One minute. थैंक यू सो मच। आपका आवाज ऊपर नीचे जाता है, क्या कारण पता नहीं है। ओके, थैंक यू, वंडरफुल, वेरी नाइसली डन। हरे कृष्णा, थैंक यू। कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्शेषाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वदक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे
गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताचाय युक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणराणि गुणराणि चन्न चिद उष्मापाय तच्छोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जिताघम स्वयं प्रकाशय नमस्करोमि। मातृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अलायय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजात ग्रह वित्त जनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे अदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न काञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः यद्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त्यमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपे विभेदेन पल्गव्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्याति संयाति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनकानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतीर्यन् न स्त्री न शन्तो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न चन्न चासन् निषेधाशेषो जयता दशेषः जिजीविषे मिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावर्तयेभ्य योन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकवरणस्य मोक्षं सोगं विश्वं सृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यम् असज्ञवेग शक्ति त्रयायाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणमनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानमेच्छत्याहं धिया हतं तं दुरत्यया माहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यतोपश्रस्फुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयोर्हरिराविराशेत् तं तद्वदातमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश् चक्रायुधो अभ्यगमत् आशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्य उर्बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं उपात चक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितम् अजः सहसावत्र्य साग्रहामाशु सरसः कृपयोज ग्राहात् विपातिता मुखात् हरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतामरिरमुम् उच्चतुच्छ्रियाणाम्।
श्री गजेंद्र स्तुति संपूर्णम। हरे कृष्णा। अंकित अंकित हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। अंकित। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा। कीर्तन कौन है अभी? प्रभु नीतीश कंदस्वामी प्रभु जी का बेटा। ठीक है, चालू करने के लिए बोलो 15-20 मिनट तक। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, yes माता जी, please start for 15 to 20 minutes माता जी, प्रभु has told. Okay, right? माँ जी can I sing? हरे कृष्णा। Krishna. Yeah, माँ जी can you hear me? Yes बेटा. Can you turn on your camera? Yeah, माँ जी my camera is on. It's Nitish Kandasamy the account. Okay. Subhas प्रभु. हरे कृष्णा. You start कीर्तन Nitish. Yes, माँ जी। सुभाष प्रभु का spotlight. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 2-3 minutes extra. Can you continue 2-3 minutes extra?
नाम संकीर्तन की जय। जय प्रभुपाद की जय। ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க நன்றி நிதிஷ். உங்களெல்லாம் பல மாசங்கள் கழிச்சு பாக்குறேன். எல்லாம் I speak in Tamil. Oh. I was taking Tamil class. I talk in Tamil. Sorry. Okay. So I am seeing all these devotee children after many months or many years. I think so, because they are busy and we are not. That's the way it is. So they are all active in so many other activities. That's the thing. Hare Krishna. Okay, moving on to today's shloka. No mute. I am all right. Hare Krishna. Shloka number 41. Correct? Hare Krishna. Somebody can guide me. 41 is right shloka? Yes, Prabhu. अतः समुद्र उद्वेलः पर्वतः प्लवयन् महीं वर्धमानो महामेघै वर्षभिः समादृश्यत. नरसिम्हा प्रभु पढ़िए. नरसिम्हा प्रभु. Hare Krishna. Narasimha. He's not coming. Okay, Tanuja Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Synonyms and translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Tatha, thereafter, Samudra, the ocean, Udvela, overflowing, Sarvataha, everywhere, Plavvayan, inundating, Mahim, the earth, Vardhamana, increasing more and more, Mahameghai, by gigantic clouds, Varshadbihi, incessantly pouring rain, Samadrashyata, King Satyavrata saw it. Translation: thereafter gigantic clouds pouring incessant waters swelled the ocean more and more. Thus the ocean began to overflow unto the land and inundate the entire world. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा. यहाँ देख सकते हैं ऐसी इतना बड़ा बादल निकल गया. बादल से इतना बरसात गिरते रहते, एकदम उसका संवर्तका जैसी बरसात होता वैसे ही होता है. पूरा भूमि को गीला कर दिया. मतलब वो सॉरी इट्स ओवरफ्लोइंग. हिंदी में क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो. Okay, so whatever it is, I will try to explain in English. So it becomes overflowing. पानी ओवर फ्लड हो गया सब जगह पे. इसमें लिखता है ना, on to the land and inundate the entire world. पूरा ये ब्रह्मांड को पूरा एकदम फ्लड हो गया. आगे भू भुआ स्वर, ये तीनों लोगों को पूरा पानी भरा हुआ है. So that's a श्लोका. इट्स अ बिगिनिंग. उन्होंने तपस्या करता है, तपस्या के साथ ये भी हो गया. अभी इसके बारे में और एक कथा है, मैं कल आपको बताऊंगा. मार्कंडेय महर्षि, उनको भी ऐसे हुआ है ये हाल. मैं वापस एक बार बताता हूँ. श्लोका संख्या 42. जायन् भगवत आदेशम ददृशे नावम आगताम तम आरुरोह विप्रेंद्रैर आधा औषधि. याद रखो औषधि, क्योंकि भगवान ने क्या बताया? औषधि जितना भी बीज है सब वो नाव के अंदर भर के रखो. ओके. आधा औषधि विरुदः आकाश. He's not coming. You do it. जी.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं Okay, you read can do this. Yeah. 42 you do it. Yeah, okay Narasimha प्रभु। या ध्यान स्मरण करते हुए भगवत आदेशम, भगवान के आदेश, दृश्य उसने देखा, नावम नाव को, आगताम पास आती हुई, ताम उसमें, आरूरोह चढ़ गया, विप्र इंद्रैहि साधु ब्राह्मणों सहित, आदाय लेकर, औषधियां, विरुधः तथा लताएं। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जो ही सत्यव्रत को भगवान का आदेश स्मरण आया, जो ही उसे अपनी ओर आती हुई एक नाव दिखी, तब उसने वनस्पतियों तथा लताओं को एकत्र किया और वह साधु सदृश ब्राह्मणों को साथ लेकर उस नाव में चढ़ गया। हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. So now we can understand how the overflow comes, right? So यहाँ ऐसी देखिए, साथ साथ उनको एक नाव भी देखा, वो नाव के अंदर पूरा औषधि को डाल दिया, उसके बाद जितना भी लता बीज सब कुछ अंदर डाल दिया, सप्त ऋषियों ने मिल गया, उनको भी उसके ऊपर चढ़ गया, इन्होंने भी उसके अंदर चढ़ गया, सारी प्रजा भी चढ़ गया। अभी ये टाइटैनिक का बढ़कर और एक बड़ा नाव है, ठीक है। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ विराम कर रहे हैं, आज भागवतम का। कल हम लोग वापस शुरू करेंगे, तो का संख्या 43 से, ठीक है। भगवत कृपा से कल तक ये अध्याय पूर्ति हो जाएगा, ऐसे दिखता है। फिर हम लोग आगे 2 दिन का कार्यक्रम में हम लोग जितना भी यहाँ अध्याय का समरी वापस एक बार समराइज करेंगे। हाँ, फिर परसों एकादशी है। एकादशी दिन में हम लोग ये भागवत प्रशंसा के लिए समय देते हैं सभी भक्तों को, और सैटरडे भी है। सभी भक्तों से विनती है, आप कैसे अनुभव किया भागवत के बारे में, ये भी आप लोग तैयारी कर लो। हाँ, देखिए कल तो हम लोग पूर्ति करेंगे होपफुली, हाँ, बिकॉज ओनली 18 श्लोका समथिंग। उसके बाद मैं फ्राइडे क्या करूंगा, मैं ऐसे ही बताया ना, पूरा स्कंद का समरी मतलब हर एक चैप्टर के अंदर जो समरी है उसको और समराइज करके आपको समझा देगा विस्तार से। मतलब कल परसों भागवत का पूरा कथा होगा, आपको पूरा प्रशंसा के लिए परसों थोड़ा समय मिलेगा। फिर शनिवार हम लोग दोपहर को रखने के लिए प्लानिंग किया है, शाम के बगैर। सभी भक्तों को भाग ले सकते तो बताइए, नहीं तो शाम को ही रखेंगे। दोपहर को ही हम कर लोग दो। थोड़ा आगे प्लान करके बताएं। हरे कृष्णा, दोपहर को कर दो, आफ्टरनून को कर दीजिए। आफ्टरनून सैटरडे दोपहर का, ठीक है, दोपहर को करना है, ठीक है ठीक है ठीक। तो यहाँ आज के लिए विराम कर रहे हैं। अभी नरसिंह आरती शुरू हो जाएगा, उसके पहले हम लोग को हमेशा प्रार्थना होता है। प्रार्थना लिस्ट में शिवानंद प्रभु का बहन के लिए प्रार्थना है, फिर हमारा मायापुर भक्त लोगों के लिए, और हिज ग्रेस पंकजांगी प्रभु के लिए, किशोलीनस भक्ति वृंद गोविंद स्वामी महाराज के लिए, फिर स्वर्ण गोपिका माता जी का जीजा जी के लिए, और बहुत लॉन्ग लिस्ट है। सुबह भी हम लोग देखा था, आजकल क्या होता है मंगला आरती में हम लोग प्रार्थना समय पे कभी कभी एक भक्त 2 भक्त के लिए कुछ होता था, मगर आजकल ये कोविड की वजह से सभी भक्तों को तो ये मारामारी, इतना मारामारी नहीं, महामारी आके सबको महामारी आके मारामारी मारामारी। माता जी, मेरा चेन्नई हिंदी को आप दूसरा मत समझाइए, प्लीज प्यार विथ में हिंदी। मैं पंजाबी हूँ, इसलिए मेरी हिंदी प्योर है। वही कह रहा हूँ, इतना हिंदी आता है मुझे। अरे हरे कृष्णा। सैटरडे लास्ट डे, सैटरडे मोस्टली। मगर क्या करेगा माता जी, हम लोग हमेशा क्या होता है 1 महीना पूरा करता है, इसलिए
उसके बाद संडे मंडे 2 दिन हम लोग वापस ये गजेंद्र स्तुति पठन करेंगे। हर एक को चांस मिलेगा, सब लोग अगर रेडी होएगा तो सबको चांस मिलेगा पूरा पढ़ने के। ओनली श्लोका ना, ओनली श्लोका, ठीक है, मगर अच्छी तरह से प्रिपेयर करके आना। सिर्फ श्लोका है, ओनली श्लोका। ठीक है, ठीक है। हाँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग अभी चैंटिंग करने का वो भूलने के पहले 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सभी भक्तों के लिए। ठीक है, आप लोगों का प्रार्थना का वजह से हम लोगों को कृपा मिल गया, आगे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादनाय हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलतङ्कानकालाय इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो ममदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण अद्भुत शृङ्गार ललिता हिरण्यकशिपु धनुभृङ्गा केशवतीर्थ नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। वृंद विनाशक की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये भक्त कृष्ण प्रिया रोज आके किचन में सेवा करती है, साथ साथ भागवत पढ़ती है, श्रद्धा पूर्वक अपने आप आ जाती है। क्योंकि ऐसी भक्त को ऐसी ये उम्र में भागवत प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी अब सभी भक्तों से वापस निवेदन है परमेश्वर को और प्रभु और गीता माता जी और उनका परिवार के लिए, और हमें सदा सत्संग मिलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान से। I humbly request all the devotees to kindly and sincerely pray for the Parameshwar Gaur Prabhu, Gita Parameshwari Mata ji, for their long association, so that we will get spiritual education and all. Hare Krishna.
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे राम